Namaskar, a very good afternoon to one and all. I welcome you on and on behalf of this Ayush Darpan Foundation team. I welcome all the dignitaries present over here on this National Ayurveda Day occasion. We are celebrating the National Ayurveda Day on 2nd November. On this occasion, we have organized an international series on Ashtanga Ayurveda. And today is our 7th series, that is Rasayana. So before moving ahead, I would like to play the Dhanvantari Vandana, and after that we will proceed for the further program. शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्. So I welcome all the dignitaries present over here. Our today's special guest and speaker is Dr. Gunwant Yevla sir, who is professor and principal, Kai Chikitsa, D.Y. Patil Ayurveda College, Pune. The second speaker of the series is Dr. Vaidya Anuj Jain, who is the practitioner of Ayurveda from Gwalior. Our today's chairman is Nadiguru Acharya Sanjay Kumar Chajed sir from Mumbai, Maharashtra. And our co-chairman is Dr. Bhairav Kulkarni Taushikar sir from Aurangabad, Maharashtra. So I welcome you all in this series. For further, I would like to request Dr. Chajed sir to welcome our today's speakers and chairman and co-chairmen. Namaskar. Of this series, which is being run by Ayush Darpan Foundation, an international lecture series on Ashtanga Ayurveda. Today, we have the part on Rasayana, and we have with us one of a great scholar of Ayurveda and internationally reckoned physician, teacher, researcher, and scholar, Dr. Gunwant Yevla with us. I welcome Dr. Yevla. We also have today, as a co-chairman of this session, Dr. Bhairav Kulkarni, one of those youngest and very enthusiastic minds of Ayurveda, been seen in last decade. So it's a pleasure to have both of you here. And of course, Anuj, probably he is the one with greatest enthusiasm, the president of Ayurveda Federation of India, which is added responsibility, being the president of AFI. I'm sure with his knowledge, because he has an excellent practical knowledge. So we will definitely enjoy this lecture. So I hand over the entire proceedings to Vilpajit to conduct the program. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So I just shortly introduce our today's first speaker, Dr. Gunwant Yevla. I think there is no need of sir's introduction. Sir is a famous personality in the field of Ayurveda and working for the betterment of Ayurveda worldwide. So just a little introduction I have to give as a formality. Sir is MD, PhD in the Kai Chikitsa Ayurveda, and sir is also a BOS member on MHS Nashik, then Goa University,
Sir is often visited for the studies and for the purpose of lectures to various parts of the country. So I think as our today's topic is Rasayana, past, future, and present. And this topic, I'm looking forward for the best presentation, and I'm sure definitely the sir's presentation will help our Vaidyas to look forward. It will give a new insight for the Rasayana. So welcome, sir. Thank you, Dr. Shilpa Madam, for introducing me, as well as for an introductory speech and the chairman of the session, Nadiguru Acharya Sanjay Kumar ji, Chhajed sir, as well as co-chairman Dr. Bhairav Kulkarni sir, and the whole team of Ayurveda Ayush Darpan Federation, ADF, for organizing this particular series. So today's topic is a very, you can say, important topic, as I mean to say, because this is the unique point of Ayurveda, that we are giving emphasis on health and to maintain health. And we are following the Swasthasya Swasthya Rakshanam. This is the first part. And the second one is Aturasya Vikara Prashamanam, that we are doing every day. Because every day, the patients used to come to our clinic or in the Ayurvedic hospitals for the treatment purpose. But there are very few, those who are coming for the preventive aspect. So it's the responsibility of Ayurvedic physicians, Ayurvedic graduates, and Ayurvedic scholars that we have to give emphasis in our regular practice about, we have to popularize this particular Rasayan concept among the population, the general population. And for that particular purpose, I would like to congratulate the organizers for organizing this particular webinar, which is specifically dedicated to Rasayan Chikitsa. Regarding my today's discussion with all of you, the participants, I have chosen the subject, the past, present, and future of Rasayan Chikitsa. Because we have the knowledge, that is the past. What is the present status? How we are using this knowledge in the 21st century? And what will be the future of Rasayan Chikitsa? So I'm going to cover this presentation in three parts, the past, present, and future of Rasayan Chikitsa. I'm giving more emphasis on the present and future part, but at the same time, it is very much required to have a discussion about the past. What is the past of Rasayan Chikitsa? So I would like to share my screen. Kindly allow me, organizers, to share my screen. Yes, sir. You can share, sir. You are co-host, so you can share easily. Okay. Hopefully you can see this particular presentation. Yes, sir. And I am also audible very nicely, I think so. Yes. So I am already introduced. I am Dr. Gunwant Yevla. I am MD and PhD in Kaya Chikitsa, and right now I am a principal and head of Kaya Chikitsa department at D.Y. Patil Ayurvedic College, Pimpri, Pune. So the Lord Dhanvantari, God of medicine, which we already did the pray just before starting this particular session, and to pray Lord Dhanvantari every day is also one kind of Rasayana, because that comes under the part of Achar Rasayana. And every physician should give emphasis on this part, that at least if we wish to have health, if we wish to have a long life, if we wish to have a healthy and long life, both the things together. So at that time, we should give emphasis in our regular practice. We should educate the general population that we should go before the God. We should have certain kind of meditation while praying or while singing the songs related to the God.
And Dhanvantari, which is a avataran of Vishnu also. And if it is possible that if we wish to have good health and long life, healthy life and everything, we are willing for that. So we have to pray for Lord Dhanvantari every day. We have to sit in front of the statue, in front of the, you can say, the photograph of Lord Dhanvantari, and at least we have to give some time for that. This is the one kind of Achara Rasayan which is described in Ayurveda. So this is my institute. I'm not going in detail with this, where I'm working. The aim of Rasayan, as we know, this is a very common and you can say very famous quote, that Jivema Sharadaha Shatam, that we have to live 100 years of life. Sharadaha means this is the Sharad Ritu which is going on. So we have to, you can say, celebrate 100 birth, 100 Sharad Ritu, and which is quoted in Rig Veda. So Vedas have seriously considered the problems of aging. So since 4,000 or 5,000 years before, the Vedas were giving importance for this Rasayan Chikitsa, because there is a correlation. If the problem of aging is there, ultimately there should be some solution. There should be some, you can say, emphasis on that particular era also. It was given. So it has been the cherished wish of human race to achieve long life, to live at least 100 years in a perfect health. Here the important is perfect health. And for that purpose, the aging, we should be healthy, because this is a swabhavik, this is a nature, that once we take birth on this planet, we have to, there is a process of aging. No one is willing to have a, you can say, balyavastha. Everyone wants to be a youth. And for that particular period of youthness, we have to follow certain rules and regulations. Not only the medicines, not only the Rasayan Chikitsa means not only medicines, but there are certain good things which are given in our ancient text. So we have to follow that. So aim of Rasayana, which is having a correlation in the Vedas also. So Rasayan definition and benefit, I'm not going in detail, but this is a very nice concept that all the tissues, all the dhatus of our body should be in a good state. So the dhatu here, the word which is I am using, that considers the dosha, dhatu and mala, all the three things together. And what is the benefit? Very nicely written here. Dirgham Ayu, this is the one and important thing. At the same time, Bhuti, Veda, Tarunavay, means the youthfulness, all these are required. If you are bedridden from the age of 60 to 80, you are living 20 years more, but which is not of use. At the same time, they have given importance to the Prabha, Varna, Swarodaryam, then Deha Indriya Balam. Here I would like to mention the Indriya Balam, which is very important because we are not taking care of our sense organs. Once we take birth, we are not taking any kind of special care related to eyes, related to nose, related to the tongue, related to the ear, and related to skin. All these five sense organs are very important. Here they have used the word Indriya, not only Jnanendriya, Karmendriya also. But we have to take care of the Karmendriya. We have to take special care of our sense organ, that is the Jnanendriya. And for that purpose, the Rasayan Chikitsa is important. And for that reason, I would like to correlate this particular thing with the Dinacharya chapter. The daily routine, daily regimen, which we follow, which is having Abhyanga, which is having in that particular list, you can see the Karna Purana, you can see in that particular list the Kaval and Gandu, Danta Dhavan. At the same time, you can see how to wash your eyes, how to clean your nose. At the same time, the Nasya therapy, Karna Purana, Abhyanga, all these things are included in the Dinacharya. So Dinacharya, following Dinacharya is also one kind of Rasayan Chikitsa. And we have to give emphasis on that particular thing, that we have to take care of our sense organ as well as
the motor organs, that is the Jnanendriya and Karmendriya. Vakasiddhim, here that particular word, which is very important. Vakasiddhim means the person who speaks. We have to speak always truth, that is very important. But at the same time, if you have a good, you can say, all sense organs are intact, they are working nicely, you have a health, your age is long, means long life is there. At that time, ultimately, in that particular population, in that particular pocket, ultimately the other persons, they will listen you. Whatever the words you are speaking, that will be followed by the other person. That is called the Vakasiddhi. If somebody is ill, if somebody is not looking good, at that time, this will not be followed by the other persons. Vakasiddhi is having that particular kind of correlation with these things. So I'm going to the next slide. So now we are going to discuss about the past of Rasayan Chikitsa. What is documented already in the ancient treatises? So the past, in that particular thing, we have to think about the Chaturveda Purusharthas, the 4 human pursuits. Means Dharma, Artha, Kama and Moksha. So Dharma, all the rightness or moral values will be followed only when we have a good health. At that time, it is possible for us to follow. It is possible for us to follow the other Purusharthas. At the same time, it is possible we can follow the Dharma if we are following the Rasayan Chikitsa, if we are following all the daily routines as well as the seasonal regimens. The second one is Artha, prosperity, economic values. Ultimately, it will be achieved if you have good health. If you have a sneezing, if you have certain kind of, you can say, illness, then it is not possible to attend all the meetings, all the travel related to your business and all those things. Ultimately, it is going to make some problem related to your business. So if your health is good, in good condition, then it is possible that the prosperity will follow you. The third one is the Kama, that is the pleasure, love or psychological values. That is also possible because if we have good health, then it is possible to have this kind of, you can say, bhavana in our mind. The fourth one is moksha, that is the liberation, spiritual values. And moksha is only possible if we have a good, long life, healthy life. So the Chaturveda Purusharthas can be achieved if we follow the Rasayan Chikitsa. So this Chaturveda Purushartha, which is called as the Indian philosophy or Hindu philosophy, that is also having a correlation with the Rasayan Chikitsa. Then another chapter, which is described in Trivida Yeshana in the Charak Samhita, the 3 basic desires, in which the first one, which is very important, that is called as Pranashana. Why it is described as a first one? If we read through the you can say the commentaries of Charak Samhita, then we will get this particular thing that if we have a prana, if we have a long life, then it is possible to fulfill the other Eshanas like Dhaneshana and Paralokeshana. So here the Pranashana is having a prime importance and which is having ultimate correlation with the Rasayan Chikitsa. So all these things are having a correlation with the Rasayan Chikitsa. Desire of longevity. As I already started, while starting the lecture, I already mentioned about this, that Swasthasya Swastha, Rakshanam, Aturasya Vikara Prashanam. So this is followed. And if you go outside and if you ask this particular question to 100 people, that do you want to die early? Everyone will say no. Do you want an unhealthy life? He will say no. Do you want to have early aging? He will say no. Because there is a big market of cosmetology, beauty and cosmetics. If you just put on your television, you will find out there are every alternate advertisement is related to the cosmetics. So by using cosmetics, it is not possible for us to stop the aging. You can have that particular part of your body, but it is not possible by using all the cosmetics externally only to stop aging. That requires the inner thing. That requires the willingness. That requires the, you can say, the complete restructuring. There should be a balance of metabolism, anabolism, catabolism, and all those things.
There should be a balance of degeneration and regeneration. So all these things are required. And for that reason, the desire of longevity. So if we have a desire of longevity, then it is possible for us to follow certain rules and regulations, and it is having a correlation with the Rasayan Chikitsa. Then if we go through the definition of Ayu, so in this particular Ayu Lakshana, it is mentioned that there should be a combination of mind, body, sense, and the soul. All these four things should have a good, strong bond with each other. Then it is possible for us to have a good life. So for maintaining this particular bond, strong bond of mind, body, senses, and the soul, that also requires the Rasayan Chikitsa. So there is a correlation between each and every concept of Ayurveda with the Rasayan Chikitsa. The definition of Swastha, Samadosha, Samaglishya, Samadhatu, Malakriya. Here, Prasanna is very important word. Prasanna, Atma, Indriya, Manaha, Swastha iti avirya. Here also, Prasanna, Indriya, Prasanna, Atma, Prasanna, Mana. The cheerfulness, that is very important. So in life, we need the cheerfulness. The Prasannatva should be there. All the sense organs are ready to accept the knowledge. That is a very nice thing. Your Agni should be in a good condition. So respect your Agni. That is one more important thing I would like to mention here. If we are able to respect our Agni, respect of Agni means nothing. If you are hungry, then you have to eat. If you are not hungry, just skip the meal. Do not overeat. That we have to follow. And that is also one kind of Rasayan Chikitsa. So the sensory and motor organ, mind, soul must be also in a pleasant state. That is called the Prasannatva, and which is very important. And such a person is called a healthy person or Swastha person according to Ayurveda. So we have to give emphasis on this part. Health is wealth. That is very, you can say, common proverb, you can say. And this good health can be maintained by using wealth. So do not put all the money in the insurance. If you have an insurance, life insurance, health insurance, and all those things, you can say the billing will be done automatically, that will be paid by that company. But that is only when, if you get admitted, if you are ill, at that time it is possible. If you are staying in a hospital, there are certain rules and regulations of the insurance company. But here, the health, we have to spend some money for health. We have to follow certain Ayurvedic rules and regulations. For that reason, we have to consult any kind, you can say, Ayurvedic Vaidya, who is having a good knowledge of Ayurveda and in this particular field of Rasayan Chikitsa. Then it is possible for him to give suggestions related to your food, to give suggestions related to your, you can say, Dinacharya, Rutucharya, what you have to eat, what not to eat, all those things, how to behave in society, how to behave in a family with the family members, how to behave in the offices. All these things are very important. And that particular advice we have to give. So this is a special branch which gives emphasis on longevity, strength, and also destroys various diseases. So Rasayan Chikitsa can be given for the cure of the disease. Here I am mentioning cure of the disease because if you are treating certain signs and symptoms of a disease and that is going, means after giving the treatment of 8 days, 15 days or 1 month or 6 months, if the signs and symptoms are disappearing, that doesn't mean that your treatment is over. After that, we have to give certain advices related to lifestyle, related to the diet, related to the medicines. Because there are certain kinds of medicine which give strength to that particular channel. There are certain good medicines which gives strength to that particular organ. So that there are less chances of accumulation of doshas second time, third time. So the recurrence we can stop. And that Rasayan Chikitsa is useful at that time. So this is very important branch of Ayurveda. And this is very important branch of medicine. Because nowadays, there is one specialized field which is coming out in the modern science about the geriatric health.
and they may start another specialization, that is ND in geriatric or DM in geriatric. And after that, they will follow certain things related to Ayurveda. So we have to give, as an Ayurveda community, we have to come out with all these ideas. We have to propagate. And I am very happy to share with all of you that Ministry of Ayush is giving nowadays very much importance to these things for the spread of knowledge of Ayurveda to the general population. Ayush Samvad activity. Then during the Azadi Ka Amrit Mahotsav, they are also organizing certain kinds of educational program for the school-going children. So this is very important. So history of Rasayan means there are certain correlations like Vedic Kal, 4 Veda, Brahmana, Upanishad, Chandogya Upanishad, and all those things. In that you will get certain, you can say, verses which are related to the Rasayan Chikitsa. In Purana Kal, Agni Puran, Bhagavad Puran, in those Puranas also you will get certain references related to Rasayan Chikitsa. Mahakavya Kal, Ramayana and Mahabharata, we know very nicely about Ramayana and Mahabharata through the television serials. So these Mahakavya Kal also having certain references related to the Rasayan Chikitsa. Because there are many references related to Rasayan Chikitsa. Bauddha Kal, in Navanitak and Vinay Pitak, in these granthas, you will get how both the bhikshus should follow certain kind of rules and regulations in their daily life, which is nothing but Achar Rasayan. Medhya Rasayan also described in both the Kala. So these are the other texts, other than Ayurvedic texts. In those texts also, you will find out the references related to Rasayan Chikitsa. Then the next one is Ayurvedic treatises. In Charak Samhita, Sushruta Samhita, Ashtang Sangra, Ashtang Hridaya, Sharanga, Bhav Mishra, we will get all the references related to Rasayan Chikitsa, and there are certain specific chapters related to Rasayan Chikitsa. And in Adhunik Kal, we are focusing now on evidence-based medicine and the PubMed research articles, Web of Science public articles, Scopus articles, which are considered as a standard. So in these also, you will find out certain references related to the Rasayan Chikitsa. So this is the history of Rasayan till date. There are Swabhavik and Aswabhavik Vyadhi. Naturally, for the Swabhavik Vyadhi, like Shudha, Nidra, Jaravastha, we have to follow Rasayan and Vajikana Chikitsa, and Aswabhavik Vyadhi can be treated with the Shaman and Shodhan Chikitsa. So in this particular slide, you can see the Charak means how the importance is less. After every, you can say, 1,000 years, chapter 1 and 2 in Charak Chikitsa Sthan, which is dedicated for Rasayan Chikitsa. In Sushruta Samhita, of course, it is related with surgery. They have given importance, at least they have given importance in the Chikitsa Sthan. But if you compare with the Ashtang Sangra and Ashtang Hridaya, they have given the importance for Rasayan Chikitsa in the Uttar Tantra, not in the Chikitsa Sthan. There are types of Rasayan like Kuti Pravashik Rasayan, indoor therapy, Vatatapik Rasayan, outdoor therapy. I am not going in detail with this. Other types of Rasayana like Kamya Rasayan. So there are subtypes of Kamya Rasayan. Sarvopaghata Shamaniya, Medhayush Kamiya, Kshina Baliya, Nivritta Santapiya, Prana Kamiya, Vrishya Kamiya. These are different kinds of Kamya Rasayan. Then Naimitrik Rasayan, Ajasrik Rasayan. Here I would like to talk about the Ajasrik Rasayan, the dietary and lifestyle Rasayan changes, which is very important. For example, regular consumption of ghee. Most of the houses, most of the household families, they are just skipping ghee. They are adding the butter, they are adding the cheese, they are adding the other things which are mixed with the salt actually. But many school-going children, they don't avoid the ghee. And there is you can say there is a lot of things related to the concept of cholesterol and all those things, and ghee is going to increase the cholesterol. So these are the misconceptions. So I'm not going in detail, but we have to think about the A1 and A2 milk also, how we have to prepare the ghee. The Deshi cow ghee, A2 ghee can be used very nicely. Then another concept, that is Medhya Rasayan.
So there are 4, you can say, medicines or the herbs which are mentioned. Mandukparni, Yashtimadu, Guduchi and Shankapushpi as a healthy rasayan. Certain preparations of rasayan, swaras, Kshirapak, Pippali Kshirapak, Ashwagandha Kshirapak, Yashtimadu Kshirapak, Ashwagandha Kshirapak, that can be used. If Ashwagandha, if it is not possible for you to give in tablet form, or if it is not possible for someone to take in a powder form, then we can advise to take with milk. There are certain kind of medicines like Swaras, Bhringaraj Swaras. It is related to the Naimirtik Rasayan for any specific purpose. If you want to your hair good, at that time you can go for Bhringaraj Rasayan. Hello? मी नंतर फोन करतो मी lecture. Then certain preparations of rasayan related to the churna or kalka, Shankapushpi kalka, Pippali kalka, Rasona kalka, Bakuchi in powder form, Gokshur in powder form can be used. Amalaki can be used in powder form on daily basis. There are certain medicated jam. We know the famous Chavanprash. There are certain kinds of avleha which are described in text that also having a good rasayan effect. Of course, Chavanprash is good one. Then there are certain gutika or pill available. There are certain ghees, medicated oils which we can use for rasayan chikitsa. Narsiha rasayan, Brahmi growth, Shatavari growth, Ashwagandha growth, Yashtimadu growth. This type of medicated ghee can be used for rasayan chikitsa. Achar rasayan. So I am not going in detail because I have covered a little bit part over there. But in Achar Rasayan, if you go to each and every description of Achar Rasayan, Satyavadinam, Akrodham, Nivrittam Madhyamaituna, in the next lines, you will find out Samajagrana Swapnam. Samajagrana Swapnam. Swapnam means Nidra here, or the rest. And Jagrana means the working hours. So there should be a balance between the working hours and the rest. And this is missing. Most of the population, they are going to bed at 12 o'clock or after that, or 11:30 or 1:30 or like that. And they want all their indriyas working in a good condition in the morning time. How it is possible? So Samajagrana Swapnam, this concept we should emphasize in general population. So there is a lot of things which are described in Achar Rasayan, like using ghee. I already mentioned all those things. Keeping the balance in sleep and daytime work. This is very important. There's Samajagrana Swapnam. So following this type of routine is considered as using rejuvenation for the rejuvenation purpose. So this is Achar Rasayan is very much important for the psychological disorders. It is not required that we have to give Brahmi, Shankapushpi and all those things on routine basis. At least we have to give a good emphasis on the Achar Rasayan for treating the psychological disorders. And there are many psychological disorders. Anxiety disorder, anxiety neurosis, depression, many things. So this is regarding the past of Rasayan Chikitsa. Now we are going to discuss about the present status of Rasayan. I have given here the picture of Trigarva Rasayan Kuti, which is at Jamnagar. I don't know the details, whether it is in working condition or not, but this is the place which is prepared as per mentioned in the Sahitas. This is the persons, the celebrities, they have time to go and stay at, you can say, the big boss house for 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, 7 weeks like this. But they don't have, the celebrities or the general population, they don't have time to go and sit in Trigarva Kuti. So that is possible actually. If someone is having money, he can opt for this Trigarva Kuti. And this power can be popularized once again. There are certain kind of research work or completed work or ongoing proposed work related to the certain diseases and related to certain drugs, and which are very much, you can say, popularized
nowadays, or this is called as evidence-based medicine or related to Rasayan Chikitsa. For example, for diabetes, Haridra, Shilajatu, Amalaki, Vijay Sar. For eye diseases, Jyotishmati, Shatavari, Triphala. For obesity, Gugul, Haridra, Haritaki, Rason. For psychoneurotic diseases, Kapikachu, Ashwagandha, Jyotishmati, and all those things. For skin disorders, Tuara, Guduchi, Bhungaraj, Khadir, Somaraji, these kind of medicines can be used as a Rasayan Chikitsa. And the research work is already completed. There are certain beneficial effects. But we have to follow this properly. This is very important. There are certain PubMed journals published data shows 120 pathways of Rasayan drug action. Here I have mentioned few of them. The pathways, the genomic stability, anxiolytic action, neuroprotective action, hepatoprotective action, cognitive boosting, cognition boosting. So there are many, you can say, pathways, and it is now a need of researcher to establish these pathways, to find out new pathways again, to establish this Rasayan effect of the drugs. List of important Rasayan drugs and their PubMed research result. Now you can see here, for example, I will see the Pippali. If you go and look on PubMed research, if you type Pippali or Piperlongum, you will get 6,040 articles related to this particular thing. So there are certain research work which is going on, which we have to collect and we have to show this particular thing from the evidence-based medicine. In that angle, if you type the Haridra or Kurkumalanga, you will get 2,242 articles. If you type turmeric, more than 3,000. If you type curcumin, more than 7,000 research articles are present. Likewise, Guduchi, Tulsi, Triphala Churna, Shankapushpi, Mumbai Amlaki, Yashti Madhu. There are many articles, research articles, which are available on the database. And every day there is going to be addition. So this is the past or and present of Rasayan Chikitsa. What will be the future of Rasayan Chikitsa? So for future of Rasayan Chikitsa, there are certain research thrust areas. Here I have given certain examples. So we have to establish these pathways. We have to establish these activities by doing certain kind of good research, which will be acceptable by all the scholars across the globe. Like Vayasthapak Mahakashaya, they are having some certain kind of anti-aging action. Rasayan for neuroprotection, because that is also very important because of the busy schedule, because of the you can say continuous thinking, because of the you can say continuously watching the television, continuously working on the mobiles, and use of excessive you can say chintan and all those things. The neuroprotection is very important. So Rasayan for neuroprotection, that is very important. Also, I would like to give emphasis that vitamins, which are very commonly consumed by the person, different, you can say, population. So vitamins and Ayurveda, vitamins and Ayurvedic herbs, that is also one kind of research question is there. So like Rutu Haritaki Rasayan in Amla Pitta. Rasayan for Rajonivrutti Janya Lakshanas. This is also a menopausal syndrome is becoming a very, you can say, large population is facing this kind of problems. Also related to the PCOS or PCOD, infertility. In those cases also, we have to take care of the Arthavashrotas by taking certain or by following certain kind of Rasayan Chikitsa. Here I would like to mention the Chikitsa is not only related to the medicine. This is related to certain kinds of rules and regulations also to be followed. Bhasmas as Rasayan. Neuropsychoendocrine axis. The endocrine disorders are high on rise. The lifestyle disorder, which is covering almost 70% diseases, obesity, cancer, diabetes, high level of cholesterol, all these things.
the psychological imbalance, endocrine imbalance. So these particular axes can be covered very nicely. And this is another research thrust area related to the Rasayan Chikitsa. The possible mechanisms by which the action of Rasayan can be interpreted with the modern aspect is as follows. The antioxidant action, anti-aging action, anabolic action, nutritive. Here I mentioned about the vitamins and all those things, the minerals. Because we have to speak in the language of protein, carbohydrate, vitamins and all those things. At the same time, we have to think about the Ayurveda, how Ayurveda interpret all these things. Hemopoietic effect, adaptogen effect, neuroprotective action, immunomodulator action. So all these actions can be are the research thrust area for Ayurveda persons. So Ayurvedic physician as well as the Rasayan Chikitsa is having a great future if we use our knowledge very nicely. If we popularize all these concepts very nicely in the general population. If we give a specific treatment plan during the young age for the geriatric purpose to avoid certain kind of geriatric diseases, that can be achieved. For example, I would like to mention here that 30, 40 years before, the tonsils were removed. After that, the surgery is related to the cardiac diseases, the bypass surgery. Then after that, the angioplasty, putting some stent. Now, much more surgery is related to the knee joint replacement or the spine surgery is coming out. If we wish that we have to come in forward, the Ayurvedic persons come forward and to educate the general population how to take care of knee. That is very important nowadays. At the age of 30, we can ask the person to apply at least 1 or 2 days in a week oil on the knees. 15 minutes for one knee and 15 minutes for the another knee. Because most of the time, what happens if we are giving a 50 ml or 100 ml of bottle of oil, medicated oil, that person is using for months together. And whenever we are asking, do you need another bottle of oil? No, he's saying that after 2 months also. No, I didn't finish the first bottle of 100 ml of oil. That is not effective. At least 100 ml of oil should be finished in 1 or 2 weeks if we are applying only for knee at the age of 30. At the age of 40, we can apply it for 3 days in a week. At the age of 50, we can apply oil on knee joint 15 minutes for each knee joint 5 days in a week. And at the age of 60 or 70, every day. So that is a way, this is the way how we can prevent the diseases, how we can avoid the knee joint replacement surgeries. So these type of concepts we have to share in general population. So we all should work together. This is very important. We should go on the right track. Means if we want evidence-based medicine, we should take the equal or same-minded persons together from each field, from the modern medicine, from Ayurvedic you can say background, from the basic sciences. We should come together. We should prepare a nice protocol, and after that we can come up with the solutions. So that should be on the right track. With the help of basic sciences, this is very important. The physics, chemistry, all these things we should we should take together, and with the help of these, we can establish certain good things. With the help of advanced technique, this is also very important. That if it is required that after doing the Panchakarma, if it is required that that person should follow certain kind of physiotherapy, then we have to accept. Ayurvedic person should have a good knowledge of physiotherapy also. Along with Panchakarma, if we use this physiotherapy, that will be helpful. It is not only required that there should be a balance of exercise. I was just reading one article 2 days before that there should be a balance of exercise. The cardiac exercise like swimming, walking, jogging, hiking, all these things should be 60% of the exercise. Like 3 days or 4 days in a week. Then we have to give 2 days
for the other exercise related to the muscles. And there should be a balance of yogas. So 10 to 15% should be given to yogas. So there are many persons that they are saying that I am following yoga only for all the 6 days or 7 days in a week. So this is not a balance. So we have to use advanced techniques. We have to consider certain kinds of, you can say, established things. We have to accept this particular knowledge also, modern knowledge also. And the evidence-based research activity, which is very important. So if we follow all those things, then the Rasayan Chikitsa is having a great future. So this is a proverb which is very famous, and apple a day keeps the doctor away. But here I would like to mention the Ayurvedic new proverb, and Amalaki a day keeps doctor, Vaidya and aging away. So we have to popularize this proverb in general population, because Amalaki, this is a very wonderful fruit. If someone is taking Amalaki every day, you can see the results. But that needs a cohort study. It requires a long-term follow-up, years together. Then it is possible for us to establish all these concepts. So, an Amalaki a day keeps doctor, Vaidya and aging away. This is a new proverb I would like to mention over here. And the Pippali. Here I am giving the picture of Pippali by a specific purpose. It is related with the Agni actually. If we take Pippali very nicely, it is going to balance our Pitta, Kapha as well as Vata. And a good anti-aging properties along with this particular thing. Because this is going to take care of your Agni, your digestive tract, your GI system, Annava Shrotas and all those things. And if your Annava Shrotas and Purishava Shrotas is working nicely, there are less chances of, you can say, the illnesses. So I would like to stop here. I would like to stop the sharing of the slides also. And thank you, organizers, for providing me this platform. Hopefully, I fulfill all the, you can say, aims and objectives of today's webinar. Thank you. Namaste. Yes, sir, definitely. So thank you very much for your wonderful presentation. And if there are any questions, doctors, please put in chat box में आप लिख सकते हैं, please. If there are any questions, you can post in the chat box. So I welcome our next speaker, Dr. Anuj Jain is here with us. I request Dr. Naveen Joshi sir to welcome all the guests. One question is there, I think. Can Avla candy be used as a rasayan? Of course, why not? If you like Avla candy, you can take it. It is better than taking the Cadbury. Chyawanprash bar is already available, and biscuits is a very long story. Kangdi created Chyawanprash biscuits 40 years ago, and Avla Chyawanprash bars are now rage in Gujarat, producing Chyawanprash bars, and now Chyawanprash candies have come in the market. The Chyawanprash Nutri bars has come in the market. Its market is going to be ruled by such things. So, and Avla basically is a rasayan. Avla has to be used as rasayan. Amalki, there are 4 Amalki rasayan is a rasayan adhyaya, and you can always use Amalki rasayan. So, Anuj, we are really eager to listen to you. Yes, sir. One more question is there from Dr. Deepti. How many days Pippali rasayan to be given as a Kshar Lavan Pippali more used is not indicated, because there are 3 drugs, Kshar Lavan and Pippali, जो contraindicated है ज़्यादा, तो can we use, how much long we should use the rasayan, Pippali rasayan? So, madam, these type of questions are related because we have to ask the student. I don't know whether she is a student or
or he is She is a practitioner, sir. She is a practitioner. But if we go through our ancient text and all those things, and if we apply our mind also, then as per the patient, we have to change all these things. We have to take decisions. There is no certain one formula. Yeah? Because if we start peoply for 2 days, and if there are certain kind of, you can say different lakshanas, which you don't expect, you can stop at that time also. So it depends on that particular person. We have to apply our knowledge. And we have to go through the books again and again. Yeah. Yes, sir. Yes, definitely. One more question is there from Dr. Kusum that some patients complain of coughing after taking the amla. What they experience? Cough. I don't think so. It's impossible. At that time, we can change the anupan only. Okay. Or we can ask the person to take the warm water only. Warm water is also a good medicine as a rasayan, and that can be used as a rasayan. Yeah. Dr. Kusum, ma'am, आप direct पूछ सकती है. You can unmute yourself and say what you want to say or what you want to ask. Probably they might be using refrigerated amla. Dr. Kusum Pandey, ma'am, please unmute yourself and ask directly. She has written in the chat box. Okay, sir. Thank you. Okay. Yes, hot water is can be given. Madam, may I want to give one comment? Yes, definitely, sir. Yes. Yeah, Dr. Yeola, sir, Yes. I like your comparison with the Big Boss house with 3 Garbhapati. Yes, I also like it. It is very useful for students and practitioners to compare this type of method to propagate Ayurveda in that way. Yes. Thank you, sir. Yes. Thank you. Yes, Thank you very much. Definitely. Sir, I request now Dr. Kulkarni, sir, for just his opinion as a co-chairman, and afterwards Dr. Sanjay Kumar, sir, will give the remark, or just not as a remark, because as sir is a senior person, Dr. Yeola, sir, there is no such type of remark for the presentation, but as your opinion, you can say. Sanjay Kumar ji is a, you can say, very experienced person than me. Yes, So yes. I accept He's his also part. from Kai Chikitsa. Yes. Dr. Kulkarni, sir. Madam, all are masters today. Dr. Yeola, sir, Dr. Nadi Guru Acharya Sanjay Kumar, sir, and Dr. Anuj Jay, sir. These are all masters. So I never any type of comparison with them. So it is an honor to me. I'm here with them. Yes. Thank you, Dr. Naveen Joshi and Dr. Yerma, ma'am. I'm with Dr. you. Joshi, Thank sir, you. are you there? I think you are there, so please. Unfortunately, what has happened that lately, because I'm being involved in development of instruments for Nadi and teaching Nadi Pariksha all over the world, people considering me as a Nadi Guru, they are forgetting that I'm a Kai Chikitsak by heart, by training, and by practice. Yes. And my rather core competence was in Rasayana. I'm under Professor Padma Shri Professor Gurdeep Singh sir, who is probably 10 day Kashyap doing Rasayana therapies on multiple aspects of the body. As Yeola sir has very commendatively provided us the data from PubMed and other sources about various herbs and their Rasayana effects. The future of Rasayana, probably Anuj might speak on that. The future of Rasayana will be like Yeola sir has just pointed it out, that we don't take care of the Indriyas. We need to take care of the separate Indriyas, and we need to develop certain medicaments in the form of Rasayana as such. And that form of Rasayana can be any methodology. What recipe we use is not very important. What principles we use are important, and that should ultimately end up in optimizing the activity of those sense organs. Because recently now we are observing the things have been changing drastically. We have chips which are on the contact lens. We are going to have the chips in the brain. And these days reading will be very easy about it, and it won't be very long now, another 5 years down the line. And to read Sahita
It's just a blink of eyelids, and the page has been copied and put it into memory, and it can be retrieved anytime when you want. So these kind of things, when they are happening, we need to improvise the quantum and the quality to its optimum level of the, not only of the nervous system, but of the cognition, which is, and that is the part of Rasayana, which is something which is very unique of Ayurveda. Otherwise, Rasayana, but Smruti, development of Smruti is something which has been very peculiarly been said by Rasayana. And that is something which is going to be the need of the future. Because the future is going to be the data. Data needed to be stored in your memory. So your memories has to be made stronger and faster. I think that with that note, I really congratulate Yevla sir for providing such a wonderful presentation. And of course, his discourse was very good. It was long time awaited phenomena to listen to him. Yes, so thank yes, you, Ayush Darpan, for again, one more question is there, Dr. Yevla sir, about the Amlaki. I think you can see also in the chat box. So please, if you can. Okay, I will try to reply in 5 minutes. Yeah. Okay, okay. No issue, sir. No issue. Dr. Joshi, sir, are you there, please? Yes, sir. Yes, madam, I am here. Yes. Yeah, sir. So, welcome, sir. Dr. Thank Anuj you. Jain, Thank sir, you to is all here. the speakers and all the speakers who are present here, especially Dr. Bhairav Kulkarni ji, Dr. Gulwant Yevala ji, Nadi Guru Acharya Sanjay Kumar Chhajer ji, and Vaidya Anuj Jain ji. I welcome to all of you in this webinar, which is especially on the topic of the Rasayana. Thank you, Dr. Silpa Yerme ji. Yes, sir, definitely. So, moving with our next session, I welcome Dr. Anuj Jain from Gwalior. So, I think also Dr. Anuj Jain sir is a famous personality, and at this age, he is doing very well. And during the pandemic situation, I think like dynamically he treated the many patients of COVID. So the next topic is related with the COVID and the Rasayan, because nowadays I think there are many with the COVID situation, there are many such type of viral diseases are here, like dengue is there, typhoid fever is there. So afterwards patients come with the debility and general debility, durbalta, ये सभी के साथ patients आते हैं. तो I think this will be also a good topic for this today's webinar, COVID and Rasayan. Yes, welcome, sir, Dr. Anuj Jain. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Joshi sir, Acharya Sanjay sir. Thank you very much, Yevala sir. Thank you. आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और पहले क्या सेशंस हुए एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा जो आज का सेशन है मैं डायरेक्ट पर आता हूँ आप सभी लोगों को थैंक्स बोलकर, धन्यवाद बोलकर कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू आयुष दर्पण टीम एंड शिल्पा मैम एंड जोशी सर. आज का जैसा टॉपिक है कोविड एंड रसायन मेरा, तो कोविड और रसायन के बारे में जब बात करेंगे तो जितने मोस्ट ऑफ केसेस जो हमने देखे अक्यूट इमरजेंसी जो आईसीयू पेशेंट्स, एआरडीएस पेशेंट्स, तो उनकी अभी हम बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि जब रसायन की बात कर रहे हैं तो जो रिकवरी पेशेंट्स थे, रिकवर्ड पेशेंट हैं और जिनको आईएलडी, फाइब्रोसिस या ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जिनको रही, उनके बारे में हम बात करेंगे. और इनकी जो एविडेंसेस हैं, डिटेल्स हैं, वो आप लोगों को पता होंगी. मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इनको प्रेजेंट करता रहता हूँ. आज एक्चुअली मैं ओपीडी में था, जस्ट फ्री भी नहीं हुआ हूँ अभी एक्चुअली, लेकिन मैंने बीच में मैम का फोन आया तो ले लिया है, इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं था, नहीं तो मैं स्लाइड्स वगैरह आपको प्रेजेंट कर सकता था. लेकिन आईएलडी और फाइब्रोसिस और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी के बारे में जब बात करें तो यस, यहाँ पर रसायन का रोल होता है और हमने कई पेशेंट्स को इन चीजों से बाहर निकाला है और वो आज फुली हैप्पीली लाइफ सर्वाइव कर जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको लंग ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी गई थी. और कुछ पेशेंट्स जो हैं 1-1 साल से ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पर थे, उनकी हमने ऑक्सीजन को हटाने में सफलता मिली है और वो सिर्फ और सिर्फ रसायन की हेल्प से मिली है. लेकिन रसायन सिर्फ आम्लकी रसायन, मैं मेडिसिन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम रसायन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो मैं समझता हूँ उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं, तो सभी के अपने अपने ओपिनियंस
होते हैं और आयुर्वेद में आचार्य चरक जी ने इसकी परमिशन भी दी है, अच्छा भी है, इससे हमें कई ओपिनियन भी मिलते हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो रसायन का मतलब यहाँ पर जब हम अपेक्षित करते हैं और जिनमें हम रिजल्ट्स दे पाए हैं, उसके लिए एक ही तरीका था हमारे पास जो हमने उपयोग किया कि रसायन को रसायन के तरीके से दिया जाए, ना कि सिर्फ मेडिसिन जो रसायन है उसको देने से कुछ फायदा हो जाएगा ऐसे पेशेंट्स में। तो फाइब्रोसिस और आईएलडी के केसेस को हम रिवर्ट कर पाए हैं, रिवर्स कर पाए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रसायन और रसायन के प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल क्या है इसका? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि रसायन काल में सुबह एम्प्टी स्टमक मेडिसिन देनी है और एम्प्टी स्टमक देने के बाद पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेशेंट को सीधा जब जो रसायन आपने दिया है, जो मेडिसिन दी है, जब उसका पाचन हो जाएगा, अब पाचन कैसे होगा वो मैं अभी डिटेल में लेंगे हम इसको, पाचन जब हो जाएगा उसके बाद पेशेंट को जब भूख लगेगी, जब उसको भूख की इच्छा होगी, डिजायर होगी, उस समय उसको सिर्फ दूध और चावल खाने के लिए देना है और कोई खाना आहार में नहीं देना है हमें, सिर्फ दूध और चावल। ये प्रोटोकॉल फॉलो करने से आपके जो ऐसे केसेस हैं जहां असाध्यत्व तो आ गया है, जहां पर रिवर्स होने की संभावना नहीं बन रही है, वो सारे केसेस हम रिवर्स कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है। बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए पेशेंट को तैयार करना, इसके लिए पेशेंट को काउंसलिंग करना और पेशेंट के सत्व को बढ़ाते रहना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिना इसके ये होता नहीं है, अदरवाइज पेशेंट छोड़ देता है और बोलता है कि 7 दिन बाद ये नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर में जब भी उसको भूख लगेगी तब वो दूध चावल लेगा पेशेंट, और उसके बाद शाम के समय भूख लगने पर हल्का सुपाच्य लघु आहार ले सकता है, जैसे मूंग की दाल का सूप, मूंग दाल चावल की खिचड़ी, इस तरीके के आहार हम एडवाइस करते हैं। 2 बार ही खाना होता है। पहला मील जो जाएगा वो रसायन पाचन के बाद लेना है। यदि रसायन पाचन के बिना हमने यहाँ पर आहार दे दिया उसको और दूध चावल के अलावा और कुछ दिया, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है हमारे पास जो हमने निकाले हैं, क्योंकि एक ही चीज खाकर पेशेंट बोर हो जाता है, तो सत्व भी कम होता है पेशेंट का आजकल। तो दूध रोटी खा सकता है पेशेंट, दूध चावल ले सकता है पेशेंट, दूध दलिया ले सकता है पेशेंट, दूध और खीलें, खीलें जो आती है जिसको धान बोलते हैं, दीपावली पर जिस पर पूजन में उपयोग होती है, लाई नहीं, खीलें जिसको बोलते हैं धान, और महाराष्ट्र में धान का लाहया भी बोलते हैं इसको। तो इसको दूध के साथ लेना है, इसमें शक्कर नहीं मिलानी है और कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है, सिर्फ ऐसा ही खाना है। इतना करने से रसायन के इफेक्ट आते हैं, जैसा लिखा है वैसे मिलते हैं, लेकिन यदि इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया तो रसायन के इफेक्ट नहीं आते हैं। और रसायन की औषधियां कितनी भी दे दो, कितने भी बहुमूल्य रसायन हम दे दें, रसायन वाले हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो हमने यहाँ पर मूलतः जब इसको थोड़ा सा और हम डीप में समझना चाहेंगे, तो रसायन सीधा एज ए मेडिसिन नहीं देना है, उसके लिए शोधन की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षणम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं था कि हम उनको शोधन कर सकें, इसलिए हमने सीधा इनको रसायन पर लिया और सफलता हमें मिली। इसके लिए हमने क्या किया, वो ये प्रोटोकॉल है जो आपको समझना है, और 21 दिन से लेकर 42 दिन तक इसको हम कंटिन्यू करते हैं। बीच में पेशेंट यदि थक जाता है या उसका सत्व कमजोर पड़ जाता है, तो हम बीच में 2-4 दिन का गैप करके फिर से उसको पेशेंट को रसायन चिकित्सा पर रखते हैं। रसायन चिकित्सा का अर्थ सिर्फ औषधि से नहीं है, रसायनों का प्रयोग करने से नहीं है, बहुमूल्य रसायनों के प्रयोग करने से नहीं है, इसमें इसका एक जो प्रोटोकॉल है वो फिक्स है और वो हमें करवाना होता है। क्योंकि जब तक औषधि रसायन काल में एम्प्टी स्टमक नहीं दी जाएगी और उसके जीर्ण होने के बाद सिर्फ इस तरीके का आहार नहीं दिया जाएगा, तो रसायन के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ये हमने कई पेशेंट्स में प्रयोग किया और हम पेशेंट्स की ऑक्सीजन हटाने में सफल हुए। पेशेंट आज नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं और बहुत खुश हैं ऐसे पेशेंट्स। उनके टेस्टिमोनियल्स, उनके रिटर्न टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे। अभी भी हमारे पास एक केस चल रहा है जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस में गया पेशेंट, और बहुत दयनीय स्थिति में था जब पेशेंट हमारे पास आया। ऑक्सीजन उसका कुछ 10 या 12 लीटर पर चल रहा था उस समय, और हमने कम करते करते अभी सिर्फ वो 1 लीटर पर है, और वो भी पूरे दिन जरूरत नहीं पड़ती है, अब 24 घंटे जरूरत नहीं होती है पेशेंट को। जब कहीं उसको जाना है तो वो यूज करता है, अदरवाइज वो सर्वाइव कंडीशन में अभी आ चुके हैं। और ये भी हमने जो किया वो रसायन के माध्यम से ही किया। अब इसके पहले भी हमने कई केसेस किए,
अभी भी एक ILD का केस है हमारे पास जो मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे कई केसेस हमने किए हुए हैं और सिर्फ रसायन के आधार पर किए। तो मेडिसिन क्या है इनमें, तो पित्तज प्रकृति यदि रोगी हो तो वैसे तो बेस्ट मेडिसिन जो इसमें है वो है वर्धमान पिप्पली रसायन। लेकिन वर्धमान पिप्पली रसायन को प्रयोग करते समय एक कॉम्प्लिकेशन खासकर हमें उत्तर भारत में देखने को मिला कि करने के बाद पेशेंट को अर्टिकेरिया इचिंग की प्रॉब्लम आने लगती है पित्त वृद्धि होने के कारण। तो जब ऐसा हुआ तो हमें वर्धमान पिप्पली रसायन को बंद कर पेशेंट को च्यवनप्राश पर शिफ्ट करना पड़ा। बहुत ही च्यवनप्राश के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन रोज ऐसे ही खाना या किसी भी तरीके से खाना च्यवनप्राश को रसायन इफेक्ट नहीं देता है। जैसे कि अभी पूछा भी था कि कैंडी के फॉर्म में, हाँ खा सकते हैं, फार बेटर देन एनी चॉकलेट और एनी कैंडी, उससे तो बहुत ही उत्तम है और बेटर है, और ये आना मार्केट में है भी, उपलब्ध भी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज ए आतुरस विकार प्रशमनम चाप पर इसका रोल देखने को नहीं मिल पाता है। उसके लिए रसायन के प्रोटोकॉल्स ही हमें फॉलो करने होते हैं और फुल परहेज पर पेशेंट को रखना होता है। च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, लेकिन च्यवनप्राश का डोज कितना होना चाहिए, 10 ग्राम अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, और उसके पाचन के बाद पेशेंट को दूध चावल पर रखना। ये परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध गाय का होना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है, और इसके बीच में कुछ नहीं खाना है। यदि ऐसा पेशेंट करता है तो लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट, ILD के पेशेंट रिवर्स करने लगते हैं और रिवर्स होते हैं। इसके साथ में कुछ और चिकित्सा भी दी जाती है, लेकिन मैं रसायन की बात हो रही है तो सिर्फ रसायन की पर मैं फोकस कर रहा हूँ। 64 प्रहरी पिप्पली भी हमने प्रयोग की, 64 प्रहरी पिप्पली का भी अच्छा प्रयोग है। पिप्पली क्षीरपाक का भी हमने प्रयोग किया, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन इसमें यही है कि जब जैसे रिजल्ट आते हैं या कोई उपद्रव आते हैं तो हमें मेडिसिन को स्विच करना होता है, और उसके बाद दूसरी मेडिसिन पर शिफ्ट करते हैं रसायन में ही। जैसे पिप्पली से रसायन से प्रॉब्लम होता है तो हम च्यवनप्राश पर शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, और प्रकृति के आधार पर देख के दिया तो ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन पेशेंट्स ऑलरेडी इतनी सारी मेडिकेशंस पर होता है पहले से, या उस समय उसके पहले वो सर्वाइवल कंडीशन से निकल कर आया होता है, तो सोच समझकर उपसय और अनुपसय के आधार पर हमें ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा रसायन हमें देना है और कौन सा कब बंद करना है। अर्टिकेरिया इचिंग बहुत कॉमन फेनोमेना देखने को मिली हमें 64 प्रहरी पिप्पली में, वर्धमान पिप्पली रसायन में। हाँ, पिप्पली क्षीरपाक 125 mg की पिप्पली पाउडर को यदि क्षीरपाक फॉर्म में देते हैं एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग तो कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को ज्यादा नहीं मिला है हमें, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी हमें बंद करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट के अंदर पित्त वृद्धि देखने को मिलती है, और खासकर यदि वो पित्तज प्रकृति है तो। वात कफज रोग भी है, वात कफज रोग है और स्थूल प्रकृति है, वातज प्रकृति है, तो ऐसे पेशेंट्स में पिप्पली रसायन का प्रयोग अच्छा है। अब वो कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं, वर्धमान पिप्पली रसायन के रूप में कर सकते हैं, 64 प्रहरी पिप्पली को पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं, या पर डोज के हिसाब से कर सकते हैं, या सिर्फ पिप्पली चूर्ण को ही प्रयोग करा सकते हैं। लेकिन यदि पेशेंट पित्तज प्रकृति का है या और पिप्पली रसायन को यदि टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो च्यवनप्राश बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इस तरीके से और इस डोज में देना होता है। इसके साथ में भल्लातक रसायन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन वो वात कफज रोगों में। 64 प्रहरी पिप्पली फिर भी कंपैरेटिवली टॉलरेंट हो जाता है, लेकिन भल्लातक रसायन नहीं हो पाता है। भल्लातक रसायन को देते समय जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो इस प्रकार है, क्योंकि मैं प्रयोग से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बताना चाहता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो और उनको मैनेज कैसे करना है वो समझ में आ जाए। अदरवाइज हम मेडिसिन देंगे और कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो चिकित्सा करते समय उसके व्यापक की चिकित्सा भी हमें पता हो, ज्यादा बेटर होता है। तो भल्लातक रसायन को जब हम प्रयोग करते हैं अमृत भल्लातक के रूप में या भल्लातक क्षीरपाक के रूप में प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को ज्यादा दिन नहीं देना है। ज्यादा दिन देने के बाद पीत मूत्रता शुरू होती है, फिर रक्त मूत्रता शुरू होती है, इस तरीके से उसको प्रॉब्लम सॉल्व शुरू हो जाती है। तो 7 दिन के बाद पेशेंट को स्टॉप करना है भल्लातक यदि आप दे रहे हैं, और 7 दिन का गैप करके फिर पेशेंट को 7 दिन भल्लातक रसायन पर रखना है। लेकिन स्ट्रिक्टली वात कफज रोगों में और कफवातज रोगों में ही करना है। पित्तज में कतई ये प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना है। पिप्पली एक बार आप प्रयोग करके देख सकते हैं, यदि डाउट है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, और उसके बाद भी उपसय अनुपसय करके उसको चेंज कर दीजिए। लेकिन भल्लातक का प्रयोग बहुत सोच समझ के
और पित्तज प्रकृति में बिल्कुल नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशंस में यही होते हैं जो मैंने बताया आपको, सरक्त मूत्रता या पीत मूत्रता या रक्त मूत्रता या रेड कलर का यूरिन होने लगता है और पेशेंट को बाद में फीवर भी आता है, यूटीआई भी डेवलप होता है, किडनी डैमेज हो सकती है पेशेंट की। इसलिए 7 दिन देकर 7 दिन बंद करना है वात कफज और कफवातज प्रकृति के रोगियों में भी। और इन बिटवीन जब बंद रहेगा उस समय उनको धान्य का फांट पीने के लिए देना है। यदि किसी पेशेंट को दिया और कॉम्प्लिकेशन यदि हो गया है तो भी धान्य मुस्ता का फांट या अपवात फॉर्म में देना चाहिए, उससे कवर हो जाता है। कोई दिक्कत लॉन्ग टर्म में पेशेंट को देखने को नहीं मिलती, 1-2 दिन में ही पेशेंट रिकवर कर जाता है। पानी की मात्रा थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं उस स्थिति में। तो ये रसायन के बारे में है जो हमने 3 रसायन मुख्यतः प्रयोग किए हैं। पहला पिप्पली रसायन, वर्धमान पिप्पली रसायन या 64 प्रहरी पिप्पली, दूसरा च्यवनप्राश और तीसरा भल्ला तक। इन तीनों के हमने कोविड में, पोस्ट कोविड में रिजल्ट देखे हैं। हाँ, कोविड में भी हमने 64 प्रहरी पिप्पली का प्रयोग किया है। जो ARDS के पेशेंट हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जब पेशेंट रहता है, वेंटिलेटर पर पेशेंट है, उन केसेस में हमने किए हैं और वहां पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है 64 प्रहरी पिप्पली का। मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए, 50 to 60 mg पर डोज सफिशिएंट होता है। दिन में 2 से 3 बार, इससे ज्यादा नहीं देना है, अदरवाइज पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होते हैं। ये बिल्कुल हमने अनुभव किया है और कई हजार रोगियों पर अनुभव करने के बाद बता रहा हूँ आपको। बहुत रोगियों पर इसके हमने ट्रायल किए हैं। और फाइब्रोसिस, ILD, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है इस तरीके के प्रोटोकॉल को फॉलो कराने से। हाँ, पेशेंट यदि 4-5 साल पुराना है तो उसमें टाइम लगेगा, यदि ILD का है तो। अदरवाइज पेशेंट सारे रिकवर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके साथ में कुछ और औषधियों का प्रयोग करना होता है, जैसे वृद्धवात चिंतामणि, श्वासकाश चिंतामणि, वो हम अलग से देते हैं दोपहर में या शाम को। रसायन काल में और कोई औषधि नहीं देते हैं। ये इसका जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से है। मुझे लगता है इतना ये जो है फाइब्रोसिस के बारे में पर्याप्त है और जो मेरे अनुभव है वो इस प्रकार है। बाकी स्लाइड्स और वो है नहीं तो ज्यादा कुछ इसमें बोलने के लिए मेरे पास है नहीं इसको डिटेल के लिए। आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं डायरेक्ट उसके रिप्लाई आपको करते जाऊंगा। अनुज जी, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुनते हुए। थैंक यू सर। और तय है कि ये सभी औषधियाँ जो है वो इस तरीके के जहाँ पर संगात्मक प्रवृत्ति हो जाएगी किसी भी ज्वर के पश्चात, तो वहां पर अधिकतम रूप में काम कर सकते हैं। एक छोटा सा क्या होता है कि वैद्य के रूप में जब हम सुनते हैं और जब आप कहते हैं कि हजारों रोगों में हमने ये किया है, तब सुनने को तो बहुत शानदार लगता है। और एक छोटी सी विनती है मेरी, जब आप हजारों की बात करते हैं तब आप परसेंटेज की बात करा करें। तो क्या होगा, फिर वो 1000 हमारे पास, समझो कि आपने 5000 पेशेंट किए हैं, उस 5000 पेशेंट में से जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के हैं, हजारों का मतलब मैं ये समझता हूँ 1000 से ज्यादा, तो एक अप्रोक्सीमेटली फिगर मैंने 4 से 5000 पेशेंट्स की। तो अगर हम इतने सारे पेशेंट या 1000 भी करते हैं, मैं तो 1000 भी बहुत अधिक समझता हूँ, पर आपने हजारों में किए हैं, तो उनके अगर आप कितने पेशेंट में आपको फाइब्रोसिस मिलता है, कितने पेशेंट्स में हमें इंटरस्टिशियल लंग डिसीज मिलता है, कितने परसेंटेज पेशेंट में हमें ऑक्सीजन डिपेंडेंसी मिलती है, कौन से प्रकृति के पेशेंट कौन से बीमारी के कौन से अवस्था में जाने के बाद इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और फिर उन अवस्था में कौन से स्थिति में रसायनों का प्रयोग कितना कार्यरत हो सकता है। वरना तो आप बता दोगे कि भाई दो भल्ला तक रसायन, अब वो पेशेंट को तकलीफ कितनी है, हम उसे भल्ला तक रसायन दे सके या नहीं दे सके, पिपली दे। आपने एक और चीज कही जो मुझे थोड़ी शंकास्पद लगती है, आप खराब नहीं माने, एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ। आपने कहा कि वेंटिलेटर पर जो पेशेंट है उसको हमने 50-60 मिलीग्राम दिन में 3-4 बार 64 पिपली दी।
तो उसका मेथडोलॉजीपन बताइए, वरना जो डॉक्टर सुन रहे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा होगी कि ये वेंटिलेटर पे दिया कैसा दवा। आईसीयू में वेंटिलेटर पे जब पेशेंट है तो हमने उसको ये 50 मिलीग्राम ही सही 64 पिपली दी कैसे, कौन से अनुपान के माध्यम से दी, कौन से तरीके से दी और उसका इफेक्ट कैसा हुआ। जैसे भल्ला तक रसायन देना, हमने शिरपाक या भल्ला तक के 10 रसायन शास्त्र में वर्णित है, और हम जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, तेल का प्रयोग करता हूँ, क्षार का प्रयोग करता हूँ, भल्ला तक शीर का प्रयोग करता हूँ, भल्ला तक अवलेह का प्रयोग करते हैं, आसोवारिष्ट का प्रयोग करते हैं। तो भल्ला तक के 10 जो है उसमें से आपने कौन सा चुना, क्यों चुना? पिपली, भल्ला तक रसायन और 54 और 64 पिपली, वर्धमान पिपली। अब ये वर्धमान पिपली में 64 पिपली रसायन रूप में अगर कार्य करनी है तो मुझे लगता है 50 मिलीग्राम बहुत ही कम डोज है, बहुत ही ज्यादा कम। तो शायद वो उतना रस में मेरा पूरा करने दीजिए। There is some confusion. मुझे 4 बजे निकलना पड़ेगा, मेरा अपना लेक्चर है। आपके तो मैं अपनी मेरी बात आप तक रखता हूँ, आप बिल्कुल जवाब देंगे, मैं इसका रिकॉर्डिंग बाद में सुन लूंगा। नहीं, क्वेश्चन ही सर कंफ्यूजन के साथ है, मैं क्लियर कर देता हूँ। 64 प्रहरी पिपली के जो प्रयोग हुए हैं वो अक्यूट कंडीशंस में है, एआरडीएस के पेशेंट्स पर है, फाइब्रोसिस के पेशेंट्स पे नहीं है। फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हजारों नहीं बोले मैंने, अक्यूट कोविड के पेशेंट्स बोले हैं, वहां पर 64 प्रहरी पिपली का प्रयोग होता है। ऐसा पोस्ट कोविड में फाइब्रोसिस के पेशेंट्स लिमिटेड हैं, उनके बारे में नहीं बोला मैंने, ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। हमें यही देखो, ये कंफ्यूजन होती है जब हमारी बातचीत चलती है। तो जी। अगर हम परसेंटेज में कहते हैं ना तो ये समस्या नहीं आती है कि भाई हमें हमारा सैंपल साइज 600 पेशेंट का था, वो 600 पेशेंट में से 22% पेशेंट में मुझे ये मिला, 28% पेशेंट में ये मिला, 50% पेशेंट में ये मिला। तो फिर समस्या सुनने वाले को भी नहीं होती और सुनाने वाले को भी नहीं होती। बराबर है। बाकी तो आपका अनुभव सब दुनिया जानती है, आपको हम अक्सर सुनते रहते हैं, हर जगह पर आपके लेक्चर्स आते हैं, उनको यूट्यूब पे सभी जगह पे देखते हैं, आपके अनुभव सभी अच्छे हैं। पर एक अभी यहाँ पर चेयरमैन करके बिठाया ना मुझे, तो मेरा थोड़ा सा हक बना, ऐसा मुझे लगा ये सफेद बालों को थोड़ा सा कुछ तवज्जो देनी चाहिए, तो मैंने अपना आपको सुना दिया। बाकी तो आप बड़े विद्वान वैद्य हो और ये विश्व जानता है, ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। सबसे आशीर्वाद है हमारे लिए। बढ़िया है सर, पर बहुत सुंदर। पर मेरा एक सजेशन, ये आप हमेशा ख्याल रखिएगा, तो फिर इस तरीके के कंफ्यूजन कम होंगे। बिल्कुल। और अगर मैंने कुछ कम ज्यादा कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। दूसरा आपका सर जो प्रश्न था कि कैसे दिया, तो हम राइस ट्यूब के थ्रू देते हैं और 50 mg अकेला 64 प्रहरी पिपली। मैंने बोला ना कि रसायन की हम बात कर रहे हैं, इसलिए रसायन पे ही हम बात करेंगे आज। कोविड पर हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, तो वो फॉर्मुलेशन होता है पूरा, उसमें समीर पन्नक, उसके अंदर 64 प्रहरी पिपली, उसके अंदर चिंतामणि, डिपेंड्स करता है कि कौन सा योग कर रहे हैं, और उसको विथ मिल्क और विथ एनी सिरप, यदि शुगर फ्री है तो शुगर फ्री, उसके साथ में डाइल्यूट करके पेशेंट को राइस ट्यूब से पुश करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को जो पेशेंट आईसीयू में या वेंटिलेटर पर होते हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे लगता है। नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है सभी को। ओके सर। Anuj Jain sir, it's a very good presentation. और जो प्रेजेंटेशन अभी कुछ बचा है अनुज सर, है ना? आपका बचा है ना थोड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाऊंगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, च्यवनप्राश को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अनुज सर, आप जो एक्सपीरियंस बताया आपने कोविड के माध्यम से, कोविड में जो आपने चिकित्सा दी है, तो ये जो आपने अभी यहाँ पर लेक्चर दिया है, ये जो विद्यार्थी वर्ग है अभी और जो नए लोग अभी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं या नए विद्यार्थी पास हो गए हैं, इंटर्नी स्टूडेंट्स है, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा आपका ये लेक्चर सुन के, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज में सिखाई जाती है, कुछ नहीं सिखाई जाती है। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन आयुर्वेदिक कॉलेज, सो मुझे पता है कि बाबा ये आपने जो बताया, वर्धमान पिपली का नाम लिया है, च्यवनप्राश नाम लिया है, और बाकी आपने कुछ रसकल्प के नाम भी लिए थे।
सुवर्णकल्प के नाम लिए थे। आरटी के द्वारा ये कैसे देना है, ठीक है, आरटी सबको पता है, आयुर्वेद के स्टूडेंट होके भी आरटी पता है, लेकिन बाकी आयुर्वेद का माध्यम नहीं पता है उनको कि आयुर्वेद का माध्यम किस माध्यम से उसको देना है। शिरपाक विधि कैसे बनाया जाता है वो पता नहीं है। कम से कम ये वर्ड सुनकर लोग आयुर्वेद की तरफ जुड़ेंगे। और आप जैसे लोग बहुत अच्छा काम अभी आप चला रहे हो, कर रहे हो, हम भी आपके साथ है। नया फाउंडेशन जो अपना बन रहा है उसमें आपके साथ ही हम काम कर रहे हैं। तो यही उद्देश्य है कि प्रैक्टिकल अप्रोच लोगों को हम दें। भले ही आप 1000 पेशेंट करो, 600 करो, 2 करो, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हम सबके साथ होना चाहिए। सर ने, नाड़ीगुरु सर अपने सीनियर मोस्ट पर्सन है, संजय सर, तो उन्होंने एक अच्छा हमें सजेशन दिया है, हमारी एक पीढ़ी को एक अच्छा सजेशन दिया है कि हम बात करते वक्त परसेंटेज में करें। तो एक अच्छा सजेशन मानकर आप लेना है इसको, डोंट टेक अदरवाइज। इट्स माय, हमारा भाई है छोटा, क्यों अदरवाइज लेगा। यस, तो ये अच्छी चीज है। सर के शब्द और ये सब आशीर्वाद है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये आशीर्वाद है और हम इनसे सीखते ही हैं और हमें आगे बढ़ना। और ये इंटरेक्शन से हम सबको सीख ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। जाए थे तब तो बहुत थैंक यू थैंक यू सर। सर ने अच्छा बताया। यस, गोदुग्ध के साथ देंगे क्या इसको, च्यवनप्राश को, बताइए सर। अनुज सर। जी, गोदुग्ध के साथ ही देना है और हाँ। 250 ml अप टू 250 ml तक दूध दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 250 ml गोदुग्ध के साथ। अच्छा, मॉर्निंग में सर, सवेरे प्रातःकाल खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, ऐसे ही। आई थिंक। और एक 2 सवाल है सर, देखिए चैट बॉक्स में, मैं भी पढ़ती हूँ और अनम्यूट भी करती हूँ सभी को, तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। पोस्ट कोविड एम्फाइसिका में बारे में है सर एक क्वेश्चन। पोस्ट कोविड एम्फाइसिका में जो अप्रोच होती है, यस सर, यस, कफ शोषक और साथ होती है। और ऐसी स्थिति में हम एग्रेसिव मोड में जब होते हैं, जब पेशेंट को अक्यूट प्रॉब्लम यदि कुछ है, तो वहां पर मल्ल सिंदूर का प्रयोग करते हैं, अन्यथा रस सिंदूर का प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन हम इस प्रकार से करते हैं: मल्ल सिंदूर, आरोग्यवर्धिनी, लघु मालिन्यभूषण, श्रृंग भस्म, सितोपलादी चूर्ण। लेकिन यदि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है, बहुत ज्यादा एम्फाइजिमा नहीं है, तो मल्ल सिंदूर को हटाकर वहां पर रस सिंदूर का सेम कॉम्बिनेशन के साथ प्रयोग करते हैं। डोजेस अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट इसको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है, मैं डॉक्टर अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ सर, लखनऊ से। जी बोलिए सर। जब पेशेंट कोविड के दौरान था तो 2 तरीके से संप्राप्ति मिल रही थी, एक बात पित्त की मिल रही थी, एक बात कफ की तरफ जा रहा था पेशेंट, राइट सर। और कोविड में पेशेंट आईसीयू में भी था, तो आपने जितने भी मेडिसिन दिए हैं तो आपने प्योर आयुर्वेदिक पे ही रखा है या अलोंग, जैसे क्योंकि पेशेंट आईसीयू में है तो वहाँ पे अलोंग एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही होती थी, तो मीनवाइल आपने जो है जो संप्राप्ति आप बना रहे थे तो वो आप प्योर आयुर्वेदिक पे रख रहे थे, एलोपैथिक विड्रॉ कर रहे थे अकॉर्डिंग अलोंग विद ऑक्सीजन, या आपका एलोपैथिक के साथ में चल रहा था? और सेकेंड पार्ट है कि जो वात पित्त की भी एक संप्राप्ति बन रही थी जिसमें पेशेंट की ब्लीडिंग में काफी चेंजेस आ रहे थे, और एक वात कफ की संप्राप्ति बन रही थी जिधर की तरफ पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्निक में था। तो सर दोनों तरफ में आपने कैसे रसायन को चूज किया, और अलोंग विद जो मेजर पार्ट है कि अलोंग विद एलोपैथिक मेडिसिन या प्योर हर्ब भी रखा, और उसको फिर आपने मनोअप में फॉलोअप में रखने के लिए क्या पैरामीटर इस्तेमाल किए सर? राइट सर, थैंक यू। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा है, हम कोविड की तरफ चले जाते हैं, हम रसायन की बात कर रहे हैं, और रसायन का प्रयोग हमने फाइब्रोसिस, आईएलडी और ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट्स पे किया है। रसायन जो हमने बताए उनका प्रयोग। यदि हम कोविड की बात करेंगे तो कोविड पर मैं एक पूरा सेशन अलग से कर चुका हूँ, विथ एविडेंस, विथ स्लाइड्स, विथ सीटी स्कैन्स, एक्सरेज, वो सारे हम इसी प्लेटफॉर्म पर एक बार कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न जो पूछा है बहुत अच्छा है, मैं उसका रिप्लाई आपको करता हूँ। पहला तो ये कि पेशेंट यदि आईसीयू में है तो दोनों मेडिसिन दी गई। हाँ बिल्कुल, दोनों मेडिसिन दी गई, क्योंकि पेशेंट हमारे पास जब आया है आईसीयू वाला, जब वो पेशेंट वहां पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और डिटोरिएट होते जा रहा है, तो ऐसे जितने भी पेशेंट थे उन सबको हमने ट्रीट किया है। हमारे पास एक सिंगल पेशेंट ऐसा नहीं है कि जो आईसीयू में गया और उसने जाके तुरंत आयुर्वेद दवा शुरू कर दी।
हमारे पास आईसीयू में जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं या जो भी पेशेंट्स हमारे पास अप्रोच करते हैं वो तभी करते हैं जब वो पेशेंट डिटोरिएट होता है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है और फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि अब भूख नहीं दिख रही है, अब आप देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति वाले केसेस हमें मिलते हैं मोस्टली जो हमने ट्रीट किए हैं कोविड इन्फेक्शन के। तो ऐसे केसेस में वात पित्त और वात कफ बिल्कुल देखने को मिलता है, लेकिन दूर से बैठकर पेशेंट को बिना देखे ये सबको समझना इतना आसान नहीं था। तो हमने इसके लिए थोड़ा बहुत वीडियो कॉल्स, थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स, इन सब के आधार पर एनालिसिस कर ये समझने की कोशिश की पेशेंट्स की क्या स्थिति है, और खासकर एक्सरे चेस्ट, इनको देखकर इस बातों को समझा और उसके अकॉर्डिंगली हमने मेडिसिन के कॉम्बिनेशन किए। और कुछ कॉम्बिनेशन तो ऐसे हैं कि दोनों स्थितियों में जा सकते हैं। जैसे पेशेंट को यदि अरिथमिया हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो वहां पर हमने फिर भृतवात चिंतामणि का प्रयोग किया है विथ अदर मेडिसिन आल्सो। कॉम्बिनेशन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हीरक भस्म, भृतवात चिंतामणि, त्रिलोक चिंतामणि, स्वास्थ्य चिंतामणि, ऐसी औषधियों का प्रयोग किया है और बहुत एग्रेसिव रूप में किया है। हमने दिन में 7-7 बार इन औषधियों को दिया है, इस तरीके से डोज को दिया, तब जाके हम इनको रिकवर कर पाए पेशेंट्स को। लेकिन यदि पेशेंट को वात पित्त की प्रॉब्लम नहीं है तो भृतवात चिंतामणि नहीं दी है, अरिथमिया नहीं है तो नहीं दिया है, पल्स रेट ज्यादा नहीं है तो नहीं दिया है। उस स्थिति में हमने यहाँ पर त्रिलोक चिंतामणि का प्रयोग किया, समीर पन्नग रस का प्रयोग किया या स्वर्ण समीर पन्नग रस का प्रयोग किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे वात कफज है तो समीर पन्नग, वात पित्तज है तो भृतवात चिंतामणि। एक छोटा एक आपको आइडिया आएगा जो हमने जिस तरीके से प्लान किया है। इसमें मेडिसिन बाकी की जो है वो लगभग सेम रहती हैं, कुछ मेडिसिन अकॉर्डिंगली हम सारे पेशेंट्स को मेडिसिन डबल दी नहीं। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनके हमने प्रेजेंटेशन भी किया है, न्यूज 24 ने भी कवर किया था, जहां हमने सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से पेशेंट्स को मैनेज किया है। चाहे उनका SpO2 80 तक गया, कुछ का 75 तक गया, कुछ का 70 तक गया, हमने कंप्लीटली आयुर्वेद मेडिसिन से उनको रिकवर किया है। ये केसेस भी हमने पब्लिश होने के लिए भेज दिए हैं, उस समय में वो होने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट मेरा था, जैसे आप रसायन के लिए बोल रहे हैं, तो इस समय आप जो डायग्नोस्टिक बना रहे हैं ये एक्सरे के बेस पे रह रहा है या CT MRI के बेस में जो आप फाइब्रोसिस की डायग्नोसिस और क्योर कर रहे हैं? तो सर उसमें जो फाइब्रोसिस या ILD की तरफ जो पेशेंट है इस समय भी, अभी भी जो पेशेंट है पोस्ट कोविड के दौरान भी जो अभी भी कई में फाइब्रोसिस मिल रही है, तो उसमें क्या आपने धूपन का भी इस्तेमाल रखा है या कुछ ऐसा? क्योंकि ICU में भी बोला आपने, बाद में भी बोला, तो क्या धूपन का भी आपने इस्तेमाल किया है? और उसमें क्या सर आपने फिर जैसे हम लोग पंचकर्म की तरफ भी कई पेशेंटों को ले गए, कई लोगों का बमन भी कराया, मैंने भी अपना भी किया, मेरे को भी था, तो वो जो सिनेरियो जो अभी भी फाइब्रोसिस और ILD की तरफ गया वो था तो सर वही था, और वो आगे बढ़ा और उसने जाके वहां पे कैल्सिफिकेशन किया या वहां पे जाके श्रोता अवरोध किया या वहां पे जाके कुछ किया, और अभी भी वो पैरामीटर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पैरामीटर को आपने कैसे उसको फॉलो अप करके रखा और उसमें आपने रिजल्ट जैसे फाइब्रोसिस में और ILD में कितने दिनों में रेस्पॉन्स किया सर? फाइब्रोसिस और ILD के केसेस में हमने धूपन का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने रसायन बताया उसके अकॉर्डिंगली ही किया है। और फाइब्रोसिस के पेशेंट्स ICU में एक भी नहीं है, जो पेशेंट बाहर आ जाते हैं वही पेशेंट फाइब्रोसिस में जाते हैं। ठीक है। दूसरा, मेडिसिन में हमने पेशेंट की प्रकृति, जो उसके हाव भाव और जो प्रकृति परीक्षण बताया गया है वो देखने के आधार पर किया है। उसके आधार पर ही हमने औषधि का चयन किया कि यहाँ पर च्यवनप्राश का प्रयोग करना है या 64 प्रेरी पिप्पली का करना है। कई बार गलत डायग्नोसिस भी हुआ है हमसे, 64 प्रेरी पिप्पली देने के बाद कॉम्प्लिकेशंस आए तो हमने उपसय अनुपसय के आधार पर उसको चेंज किया है, बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स का कुछ इसमें ज्यादा कुछ रोल होता नहीं है कि कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को देख के हम कुछ इसमें डायग्नोस कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल उराछत, वात व्याधि, राजयक्ष्मा, कुसुम जी मैम, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, कोविड के टाइम में आपके बड़े लेक्चर्स हमने सुने और हमने उस हिसाब से पेशेंट को भी दिया था, बहुत आराम मिला। बस एक पेशेंट का थोड़ा अब जाके हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ड्यूरिंग कोविड उनका HRCT स्कोर 3 था
तो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं थी। उनको रसमाधा और श्वास का चिंतामणि दिया था और सीतोपलादी और वासावले, तो वो सही था उस वक्त, उसको कुछ खास नहीं था। तो वो अभी कुछ दिनों में उनका क्या होता था कि जब वो गर्म एटमॉस्फेयर में जाती थी, सपोज किचन के पास गई या कार में अचानक बैठी खड़ी हुई गाड़ी में बहुत देर से बंद है, तो उनको ब्रेथलेसनेस होता था। तो फिर उनका एक्सरे, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है और उनके HRCT में अभी आया है कि एम्फाइजिमेटिस बुल्लेसिन पर पेशेंट को मैं उस वक्त फिर बाद में उनको पोस्ट कोविड माधव रसायन दे रही थी, माधव रसायन प्लस, और प्रभाकर वटी दिया था मैंने उनको, क्योंकि उनको कभी कभार वो रिब्स में पेन बताती थी। तो इसमें एम्फाइजिमेटिस बुल्ले दिया है। तो जैसे एलोपैथी में उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये इरिवर्सिबल है, इसको कुछ नहीं हो सकता है, बस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अपने यहाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो सर मैं उनका कैसे क्या सोचूं, क्या करूं उनका? हाँ, ऐसे केसेस में बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा। आप अभी तो मैं कुछ जो है वो बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आप इनकी रिपोर्ट्स मुझे शेयर कर दीजिए मेरे नंबर पर, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि क्या और देना है और कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पर, अगेन अप्रोच हमारी यही रहेगी कि यहाँ पर हम कफ का शोषण करें और वायु का अनुलोमन करें, पित्त की वृद्धि ना होने दें। यही अप्रोच के साथ यहाँ हम ट्रीटमेंट करेंगे और इसमें पेशेंट को लाभ जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो जो मैंने बताया कि यहाँ पर रस सिंदूर, लघुमालिनी, श्रृंग, शीतोपलादी, इनका ही प्रयोग करना है, साथ में आरोग्यवर्धनी। तो श्रोतोशोधन जब हो जाएगा तो वहां पर जो एम्फीजिमा कलेक्ट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं होगा। तो श्रोतोशोधन पर हमें काम करना है, फिर शोषक पर काम करना है। दो चीजें हैं इसमें, पहले श्रोतोशोधन करेंगे और फिर शोषण करेंगे, दोनों काम कर देंगे तो पेशेंट रिकवर कर जाएगा। जी सर, मैंने उनको कनकासव दिया था, तो उसमें उससे तो नहीं ना कुछ है कि स्ट्रेच हो गया है, फैल गया है, ऐसा तो नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। कनकासव देने से एक ही कॉम्प्लिकेशंस आता है कि ड्राई कफ हो जाता है पेशेंट को। यदि ड्राई कफ हो रहा हो तो बंद कर दीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत गाइड करते हैं आप और हम लोग की प्रेरणा है आप सर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर भारती, डॉक्टर दीप्ति। हाँ हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार, बोलिए। सही में सर, आपके वीडियोस देखना और आपको सुनना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्ञानवर्धक रहता है और प्रेरणादायी भी रहता है सर। पोस्ट कोविड में हमने देखा है बहुत पेशेंट, मतलब रिलेटिव्स में भी पोस्ट कोविड डायबिटीज, मतलब शुगर लेवल बढ़ी हुई मिल रही है, तो इसमें रसायन किस तौर पे हम दे सकते हैं? हाँ, पोस्ट कोविड पेशेंट्स में यदि स्टीरॉइड्स का प्रयोग हुआ है तो मोस्टली पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है। अदरवाइज पोस्ट कोविड साइकोसिस होने के कारण भी शुगर बढ़ी हुई मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बड़ी आसानी से यदि शुगर बढ़ी है तो उसको सीधा डायबिटीज का लेवल लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसको रेज्ड ब्लड शुगर या शुगर बढ़ गई है ऐसा बोलना ज्यादा उचित होता है, क्योंकि जैसे ही हम DM या डायबिटीज बोलते हैं वहां पर फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो पोस्ट कोविड शुगर बढ़ने के कई और भी कारण हैं जिसके कारण ऐसा होता है, लेकिन कोविड के केसेस में स्पेसिफिकली हम बात करें तो पोस्ट कोविड साइकोसिस और पोस्ट कोविड स्टीरॉइड्स के प्रयोग के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो दो काम इसमें हम कर सकते हैं जो हमें करने चाहिए कि पेशेंट्स की लाइफ स्टाइल को जरूर करेक्ट करें। शाम का खाना 7 बजे तक, 7 बजे के बाद कुछ नहीं देना है पेशेंट को खाने के लिए। पानी पी सकता है, नहीं तो अभी कोई पूछेगा पानी भी नहीं देना है, तो खाने के लिए नहीं देना है, फूड नहीं देना है। और सुबह खाली पेट नहीं रहना है। बहुत सारे लोग जो है सुबह एम्प्टी स्टमक बने रहते हैं और सीधा 11-12 बजे खाना खाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये दो काम यदि किए गए तो पेशेंट रिकवर करने लगेगा। और मेडिसिन में पोस्ट कोविड साइकोसिस यदि देखने को मिल रही है तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली लाइक स्ट्रेसकॉम या अश्वगंधा, साथ में मानस मित्र बटक, इन मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। और यदि साइकोसिस देखने को नहीं है, पेशेंट के अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं है, यदि ऐसे कोई उसके प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, तो उसके लिए फिर उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देना होगा, जैसे सूत शिखर रस, इनका प्रयोग करेंगे तो गृहिणी पर कार्य होकर पेशेंट को शुगर कम आने लगेगी और ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पेशेंट्स नहीं है और ये साइड इफेक्ट के कारण बने हुए हैं। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स में अगत की चिकित्सा देना जरूरी होती है, क्योंकि जो विरुद्ध चिकित्सा होती है उसको गर्भ में हमारे आचार्यों ने
काउंट किया है। तो यहाँ पर गर्भविष की चिकित्सा यदि हम कर देते हैं तो पेशेंट को लाभ मिलता है, ऐसा देखने में मेरा अनुभव रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। और ऐसे पेशेंट्स भी बहुत आ रहे हैं अभी जिनको पोस्ट कोविड शुगर बढ़ी हुई है या चेस्ट पेन की कंप्लेंट करते रहते हैं बार बार। तो मोस्टली साइकोसिस से मिलते जुलते केसेस देखने को मिलते हैं। जब उनकी डिटेल हिस्ट्री और डिटेलिंग लेंगे तो आपको एक लक्षण ये मिलेगा। तो उसके लिए वहां पर मन पर कार्य करने वाली चिकित्सा भी जरूरी है, और साथ में गर्भविष की जो चिकित्सा दी है भागवत जी ने उत्तर स्थान में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, योग दिया है, फॉर्मूला का योग साथ में करेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर कनवलजीत प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर कनवल मैम प्लीज आप डायरेक्टली पूछिए। आपने लिखा तो है च्यवनप्राश अनुपान इज मिल्क, देन लेटर आफ्टर इट्स पाचन अगेन पेशेंट मस्ट टेक मिल्क एंड राइस, सो दिस वुड नॉट कॉज कफवृद्धि। हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट, जैसे आपने बताया कि अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए कि और कुछ खाने के लिए नहीं देना है, ये रसायन के ये ही कंडीशन के लिए रखी गई है जिससे कफ वृद्धि नहीं होती है। यदि हम और कुछ खाने को देंगे, गेहूं खाने को देंगे या और किसी तरीके का अन्न खाने को देते हैं तो कफ वृद्धि करेगा, वो नहीं हो इसलिए देना है। हाँ, यदि किसी पेशेंट में बहुत सीवियरली उपस्थित है, आम दिखाई दे रहा है, शामता है, जुकाम है, ऐसी स्थिति है तो यह पहले है, लेकिन देना दूध के साथ ही है। Okay, sir. Thank Kamal? you. Yes, Dr. Kanwal ji. Yeah. Thanks a lot. Hello? My query is clear. हेलो। यस मैम। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। मुझे पूछना था, मेरे पास एक पेशेंट है 48 ईयर्स फीमेल, उनका पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, तो उस टाइम उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में वायरल हेपेटाइटिस एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डेवलप हुआ है और उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट ली थी। हेलो। हाँ बोलिए। वायरल हेपेटाइटिस हुआ है और हेपेटाइटिस हुआ है तो उनको अभी ओनाकॉर्टिक वगैरह मेडिसिन चला था, तो मेरे पास अभी आए हैं तो उनको आपका शायद नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज ही नहीं आ रही है प्रॉपर। डॉक्टर दीप्ति आप पूछिए मैम आपका क्वेश्चन कि आपने जो कंटकारी गुरुत्व, चित्र गुरुत्व वगैरह दिया है ना, तो कब बंद करना है इसको? नहीं, मुझे ये पूछना है कि पोस्ट कोविड पेशेंट था जिसको कैल्सिफाइड ओपेसिटीज डेवलप हुई है राइट लंग में, अपर लोब में, और पेशेंट एडमिट थी 1.5 मंथ। सारे एलोपैथिक मेडिसिन गए हैं, इंजेक्टेबल स्टेरॉइड सब गया है, रिकवर हुई, बट बाद में उसको डिज्निया रहता ही था। तो उसको आयुर्वेद से थोड़ा दीपन पाचन और कुछ स्वर्ण मालिनी वसंत, कंटकारी घृत और चित्रखरी तक की ऐसा कुछ दे के, आरोग्यवर्धिनी दे के वो अच्छे से रिकवर हुई है। 2 मंथ्स हो गए हैं। अभी ये सारे मेडिसिन बंद करके उसको अभी ओनली 1 रसायन देना है, तो कौन सा रसायन चूज करे? उसकी पित्त कफ प्रकृति है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पित्त कफज प्रकृति है तो अगेन यहाँ पर च्यवनप्राश बेस्ट ऑप्शन है आपके पास जी। और पेशेंट के सर कुछ मतलब अगर इम्प्रूवमेंट हो जाती हो तो हमें कुछ क्रॉस चेक करने की जरूरत है कि नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगेन सीटी स्कैन एक्सेट्रा? नहीं, करना ही चाहिए। एविडेंस भी जनरेट होता है, हम ये बहुत प्रिफर करते हैं, हम जरूर जनरेट करते हैं और ये फायदा भी होता है, पेशेंट भी सेटिस्फाइड होता है। यदि पेशेंट है यस डू इट, आप उसको करवाइए, बहुत अच्छा है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन है, अग्निमांद्य की कंडीशन में रसायन की प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग? हाउ टू प्लान? रसायन जब हम दे रहे हैं तो रसायन अपने आप यापन करने वाला ही। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर यदि पिपली का प्रयोग कर रहे हैं तो पिपली क्या करेगा? आम पाचन ही तो करेगा। उसके साथ में जब दुग्ध जाएगा तो वो यापन भी करेगा, इसलिए तो उसके साथ में और कुछ नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि कोई बहुत ज्यादा ब्लेंडर नहीं है पेशेंट के साथ, यदि बहुत ज्यादा आम नहीं है तो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंडीशन ऐसी है वहां पर हमें डायरेक्ट काम करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले उसको
आम पाचन करें, फिर उसको रसायन पर रखेंगे, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो टाइम नहीं है। उससे बेटर ऑप्शन क्या होता है? उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आपने मेडिसिन दी, उसको रसायन शुरू किया, यदि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, कोलिक पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप शुंठी चूर्ण शाम को ऐड कर दीजिए उसमें 1-1 ग्राम। तो पेशेंट्स की जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं होंगे और पेशेंट जल्दी रिकवरी होगा। हाँ, यदि हमारे पास टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम की, पेशेंट आराम से है और आपको आराम से काम करना है, जैसे अभी आपका केस है जिसमें इजी है, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर यदि क्षमता है तो पहले आम पाचन कर लेंगे और उसके बाद फिर च्यवनप्राश को दूध के साथ शुरू करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर भारती? हाँ सर, एक पूछना था, अभी जैसे ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स में धातुक्षयात्मक संप्राप्ति ज्यादातर तो मिलते ही है, क्योंकि काफी मेडिसिन भी उनको झेलने पड़ते हैं एलोपैथी के हिसाब से, और आहार विहार आदि भी ये सब असंतुलन होता है। तो धातुक्षयात्मक और जीर्ण ज्वर का यदि हम ये देखेंगे तो सिद्ध घृत का कैसे रोल रहता है सर? एज अ रसायन हम दे सकते हैं या कौन से स्टेज में देना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर क्षीर सटपल घृत का प्रयोग बहुत अच्छा है जो करना चाहिए, और घृत देते समय सिर्फ यही देख लेना है कि पेशेंट की अग्नि यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज घृत देने से कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो पहले थोड़ा सा अग्निवर्धन कर देंगे। नो डाउट क्षीर सटपल घृत के कंटेंट्स भी जो है वो अग्निवर्धन करने वाले ही हैं, लेकिन यदि पहले से सामता ज्यादा है तो वहां पर आम पाचन करके फिर आप घृत का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और क्षीर सटपल घृत इसमें अग्रणी रहेगा। तो ये शमन मात्रा में ही देना है कैसे, मतलब डेली खाने में? 5 ग्राम दिन में 2 बार, खाने के बाद या खाने के बीच, समान काल में या फिर व्यान उदान काल में। ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। सर, पोस्ट कोविड में एक पेशेंट है, उसको ब्लैक फंगस हुआ है गले में, तो उसका सर ट्रीटमेंट एलोपैथिक में चल रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया जाए सर। तो उसको आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। तो अब उसकी क्या स्टेटस है, उसको कहाँ पर है, ऑर्बिट में है, मैक्सिला में है, कहाँ पर है, कहाँ पर उसके इफेक्ट आए हैं, ऑरिफाइज हुआ है क्या, कहाँ पर बोन एरोजन हुआ है, वो हमें सब देखना होगा, उसके बाद उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। सर वो कल रिपोर्ट लेके आ रहा है पूरा, तो मैं चाहूंगा कि सर आपको सेंड कर दूं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप रिपोर्ट लेके उसकी पूरी कंप्लेंट्स लिख के उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। सर आप हमारे प्रेरणा स्रोत है सर, बिल्कुल बहुत अच्छा सर। मैंने क्लिनिक खोला है सर, आप सब लोगों की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है सर। आप लोग का आशीर्वाद ऐसी बना रहे सर। MP दमोह में ही सर खोला है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बधाई। प्रणाम सर। एनी मोर क्वेश्चंस? सर एक यूजुअल क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग अभी ठंडी के दिन आने ही वाले हैं, तो विसर्ग काल वगैरह, ऋतु वगैरह, तो रसायन हम स्टार्ट करते हैं, च्यवनप्राश तो हर घर में खाया ही जाता है, तो इसको कितने समय तक कंटिन्यू ले, या फिर बच्चों में आप कैसे रसायन एडवाइस करेंगे? इट्स नॉट रिलेटेड विद कोविड, इट्स अ जनरल क्वेश्चन फॉर डॉक्टर्स। यहाँ पर च्यवनप्राश वो रसायन का कोई काम करता नहीं है। अच्छा। एज ए न्यूट्रिशन, एज ए सप्लीमेंट बिल्कुल लिया जा सकता है, दिक्कत नहीं है, और जब तक 1.5-2 महीने तक सर्दी रहती है ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि गर्मी में च्यवनप्राश नहीं खाया जाता, बिल्कुल खाया जाता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कब तक खाएं, एक भी सब्जेक्ट है ना कि कब तक खाते रहें। आजकल जो तरीका है खाने का वो गलत है एक्चुअली, च्यवनप्राश खाने का। लोग रात में खाते हैं दूध के साथ, तो वो कोई रिजल्ट ज्यादा देता नहीं है, उसका कुछ ज्यादा उपयोग होता नहीं है। तो जिन लोगों को भी खाना है वो सुबह एम्प्टी स्टमक लें दूध के साथ, और जिनको दूध डाइजेस्ट होता है वो सिर्फ पानी के साथ या जूस के साथ भी ले सकते हैं। 2 से 3 महीने का समय पर्याप्त होता है इन जनरल खाने के लिए, फिर गैप करके फिर अगले साल सेम जैसे लेते हैं वैसे ले सकते हैं, लेकिन समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काल जरूर बदलना चाहिए। रात में खा के सो जाना, वो भी रात में डिनर करते हैं लोग 8-9 बजे, उसके बाद फिर 10 बजे वो दूध और च्यवनप्राश खा के सो जाते हैं, तो उससे अग्निमान जरूर होगा, क्योंकि च्यवनप्राश और जितने भी रसायन इस तरीके के हैं वो हैवी टू डाइजेस्ट है, उनको डाइजेस्ट होने के लिए हमें समय देना पड़ता है। जब वो नहीं मिलेगा तो पेशेंट को ऑलरेडी अग्निमान हो जाएगा, अजीर्ण होगा, और फिर उसको दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होंगे।
तो जब भी जो भी लोग च्यवनप्राश को एडवाइस करें इन जनरल और एज ए रसायन और एनी रसायन, तो उसको एम्प्टी स्टमक खाली पेट सुबह दें, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलते जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर अच्छा तो नहीं है, तो लोगों को वो भी हजम नहीं होता है कि बिना चाय पिए, मतलब सुबह सुबह चाय तो चाहिए। ऐसे केसेस में हम प्रैक्टिकल कैसे मतलब क्या सलाह दे सकते हैं कि चाय के आधा एक घंटे के बाद खा लीजिए या कैसे, मतलब क्योंकि ये ना बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सर प्रैक्टिस में। बराबर है आपका कहना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं थोड़ा एग्रेसिव तरीके के पेशेंट्स करता हूँ, तो ये सब एक्सक्यूज फिर मेरे सामने बचते नहीं है। जो बोल दिया वो करना है, मतलब करना है, यदि रिजल्ट चाहिए तो वो करना पड़ेगा। अब पेशेंट को चाय भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए और उसको आराम भी चाहिए, तो फिर उसको नमस्कार कर देता हूँ मैं, भैया घर जाओ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलने से फिर पेशेंट लौट कर आता है और वो ट्रीटमेंट प्रॉपर कराता है, क्योंकि पेशेंट के अकॉर्डिंगली जितना हम झुकते जाएंगे वो हमें झुकाते जाते हैं। बोलते हैं वो फिर एक और ऑप्शन सर हम जूस पी लें। अरे वहां पर उद्देश्य क्या है पहले ये समझ आना पड़ेगा उनको, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमको ही उद्देश्य नहीं मालूम तो हम पेशेंट को कैसे समझाएं। जब हम पेशेंट को समझाते हैं तो वो समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कि सारे पेशेंट ही ऐसे आते हैं कि वो फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जब जान पर आती है तो हर कोई फॉलो करता है। तो उनको एक बार समझाया कि हम क्यों बंद कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, किस कारण से बंद कर रहे हैं वो समझाना होता है कि इसके बीच में हमें मील्स नहीं चाहिए, इसलिए हम ये बंद कर रहे हैं, हमें चाय से आपत्ति नहीं है, ऐसा करके समझाया तो वो समझते हैं। और जान पर जिसके पेशेंट के आई है ट्रीटमेंट कराना है तो कराएगा ही, वो कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते हम। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे कन्विंस करेंगे। बिल्कुल राइट। अब वो कोई पेशेंट इन जनरल आया है और पूछ रहा है कि हम क्या खा लें एज ए सप्लीमेंट, एज ए टॉनिक, तो ठीक है च्यवनप्राश खाओ, उसके 1 घंटे बाद चाय पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर पेशेंट्स को ये हमारे से सहानुभूति चाहिए थी कि चाय भी पी लो भैया और बाद में खा लो, मतलब उनको चाय का तो चाय की समस्या बड़ी है भारती जी। वो आपसे कहलवाना चाहता है, डॉक्टर एक बार बोल दे तो उसको ग्रांटेड हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं बोलना। यस यस एग्जैक्टली, ग्रांटेड चाहिए उसको। यस यस बिल्कुल। सो आई थिंक वो इनिशियल प्रैक्टिस में बहुत परेशान करता है, लेकिन आपने 2-4 पेशेंट्स को जब ये बोल दिया ना तो 5वां पेशेंट जो आएगा वो प्रिपेयर होकर आता है, क्योंकि वो 4 पेशेंट्स बता देते हैं कि उनके पास जाओगे वो स्ट्रिक्ट है और इस तरीके का ही इलाज करते हैं, तो फिर जो आपके पास 5th पेशेंट आता है ना वो प्रिपेयर होकर आता है। तो यस इनिशियल प्रैक्टिस में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप स्ट्रिक्ट रहेंगे वैसे वैसे पेशेंट्स भी उस तरीके के ही फिर आते हैं। बिल्कुल, ये भी सही बात है। बिल्कुल। सो आई थिंक वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ आवर टुडे सेशन। So now I request Dr. Bhairav sir, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि आप भी काय चिकित्सा से है। सर आप म्यूटेड है, शायद म्यूटेड है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू डॉक्टर अनुज जैन सर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर मैं काय चिकित्सा से बिलोंग करता हूं तो मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन हूं। किताबों में बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देंगे तब हम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और आज के वक्त हमारे मराठी में बोलते हैं बाप दाखवा नहीं तो श्राद्ध कर, ऐसा हमारी मराठी बोली भाषा में बोलते हैं ऐसा, कि लोगों को एविडेंस बेस पे अभी हमें चलना चाहिए। आयुर्वेद बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम एविडेंस नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा ये सारी चीजें। और वर्ल्ड वाइड हम जब जाने वाले हैं तो हमें एविडेंस ही चाहिए हमारे हाथ में। अभी बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछे गए, मैं सब सुन रहा था। सर एक सवाल मैडम ने पूछा कि चाय की समस्या ये, लेकिन आपने बराबर जवाब उसका दिया है कि पेशेंट के बारे में आपको सोचना है, लेकिन उसके हेल्थ के बारे में सोचना है, ना कि उसके तौर तरीके आप सह लो। उसको एक बार बता दो कि बाबा च्यवनप्राश आपको एम्प्टी स्टमक खाना है तो एम्प्टी स्टमक ही खाना है, नहीं तो मेरे पास मत आइए। एक बार आप आपके दायरे में रह गए तो पेशेंट भी आपके जो आप परहेज उसको बताएंगे, पथ्यापथ्य जिस कल्पना जो बताई गई है वो यहाँ पर बहुत अच्छी काम करती है। तो ये मेरा कहना यहाँ पर है। बहुत अच्छा लगा सर, अनुज सर आपका लेक्चर सुन के, थैंक यू वेरी मच। एंड डॉक्टर नवीन जोशी सर, आपने यहाँ पर मुझे चांस दिया था एज अ को चेयर। डॉक्टर यरमे मैडम, आई थैंकफुल ऑल।
और गुणवंत येवला सर, ही इज अ सीनियर पर्सन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, काय चिकित्सा पर्सन. डॉक्टर आचार्य सर, छाजेड़ सर, ही आल्सो विथ अस. सो सभी लोगों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छा लेक्चर ये हुआ है. You can add also about the रसायन, पोस्ट कोविड रसायन के बारे में आपका भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप एक हमारे पास समय है 5 मिनट का शेयर कर सकते हैं. ओके, ठीक है. मैडम, पर्सनली एक्सपीरियंस मेरा ये है, पोस्ट कोविड में मैंने यहाँ पे औरंगाबाद में कुछ पुलिस को मैंने मेडिसिन बना के प्रिपेयर करके दिया था. लगभग 100 पैकेट मैंने पुलिस को दिए थे, जो कि पुलिस हमारे कोविड वॉरियर थे, जो कि पहले कोरोना काल में. तो हमने उनके पास, अभी पुलिस जो रहता है वो खड़े ही रहेंगे वो लोग, क्योंकि हम बाहर ना निकले. तब पूरा धूप काल का समय था, आयुष काढ़े का बहुत प्रोपोगंडा तब हुआ था. तब हमने एक छोटा प्रयोजन उस वक्त किया था सर. अनुज सर, आप करेक्ट कीजिए मुझे. हमने सर षडंग पानीय जो अपने ग्रंथों में बोला गया है, षडंगोदक जो बोला गया है, हमने उसके कुछ पाउचेस पुलिस को दिए थे. और वो पाउचेस थोड़ा सा सादा पानी और हमारा मुस्ताफर पटकुशिर जो अपना षडंग पानी है वो हमने उस टाइम पर दिया था, जो कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे. और उस प्रकार से जिस पर्सन ने वो लिया है पुलिस ने, उसने उसके घर में बताया कि ठीक है, बहुत सारे लोग तब काढ़ा पी रहे थे, लेकिन हमारे जो पुलिस वाले थे कुछ, वो 100 में ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं 100 लोगों ने लिया है, उसमें से 20 या 25 लोगों ने लिया है और उनके घर वालों ने फिर वो शुरू किया है षडंग पानी है. तो उसका भी एक अच्छा रोल कोविड में मेरे ख्याल से हुआ है. ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, बाकी ग्रंथों में सब लिखा है, कफग्न द्रव्य क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये सब लिखा है, लेकिन इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. बराबर सर, आपका कहना बिल्कुल सही और अनुभव भी आपने जो शेयर किया है बड़ा अच्छा है. हमने जब अक्यूट फीवर के पेशेंट्स कोविड में देखे, उस समय षडंगोदक का प्रयोग किया और हमने जो 3 डेज कोविड डाइट रखी थी वो इसी प्रकार से हमने इसको बनाया था. फर्स्ट डे सिर्फ गुनगुना पानी और षडंगोदक, ऐसा ही लेना है पूरे दिन, कुछ नहीं लेना है इसके अलावा. और पूरे एक दिन में 1 कोकोनट वाटर सिप बाय सिप थोड़ा करके पूरे दिन में ले सकते हैं. वो भी इसलिए क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा पैनिक कर जाता है, फीवर आ रहा है, कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं, टेंडेंसी होती है लोगों की कि एनर्जी कहाँ से आएगी, तो इसलिए सिर्फ 1 कोकोनट वाटर, वो भी पूरे दिन में, इससे ज्यादा नहीं. एक साथ तो लेने को बिल्कुल हमने अलाउ नहीं किया. और सेकेंड डे सिर्फ मूंग की दाल का सूप बना कर लेना है और थर्ड डे मूंग दाल चावल की पतली खिचड़ी लेनी है. ये 3 डेज कोविड डाइट हमारी थी, जो बहुत फेमस रही और बहुत अच्छी रिकवरी रही कोविड के पेशेंट्स में जब फीवर रहता है उनको. इससे ही इंस्पायर्ड होकर मेरे एक स्टूडेंट ने फीवरीना करके मेडिसिन बनाई और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल षडंगोदक को पाउच फॉर्म में लाए हैं, डिप फॉर्म में. तो ये एक अच्छा आइडिया है जिसने उठाया और पिक करके इसको बनाया है. आपने बात की षडंगोदक की तो मुझे याद आ गया. बहुत बढ़िया. तो से अक्यूट फीवर में बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट रहा. एज ए प्रिवेंटिव आपने बताई, हमने अक्यूट फीवर जब रहता है तब मैनेज कैसे किया. और ये जो केसेस थे, मोस्ट ऑफ केसेस हमने सिर्फ आयुर्वेद से मैनेज किए हैं. बहुत अच्छे रिजल्ट, क्योंकि लंघन नहीं करेंगे तो फीवर नहीं उतरेगा. जो बोलते हैं कि सर फीवर आ रहा है, हमने ये मेडिसिन दे दी, वो मेडिसिन दे दी और फीवर कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा फीवर कम. आप उसको पहले लंघन पे लाइए और उसके बाद में त्रिवन कीर्ति 250 mg का डोज पर डोज अप टू 1 ग्राम पर डे, इतना डोज जब जाएगा तब फीवर उसका कम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. लेकिन एक बात याद रखनी है, 3-4 दिन से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि इतने में हो जाता है कवर. इसके बाद भी यदि हो रहा है तो डोज को कम करके या मेडिसिन को फिर बदल लेना होता है, क्योंकि इसमें वत्सनाप की मात्रा होती है. लेकिन अच्छी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं तो 250 mg पर डोज एडल्ट के लिए मिनिमम इतना हमें चाहिए और अप टू 1 ग्राम तक एसओएस जरूरत जैसी है, बीडी, टीडीएस और क्यूआईडी, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको दे सकते हैं. और बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं हमारे अक्यूट फीवर में with 3 days COVID diet, with Shadangodak, with some medicines like Trivankirti, Sanjeevani Bhatti as per the protocols and conditions. Yes, बिल्कुल. So I think today's discussion was very fruitful. और काढ़े की भी अपनी एक स्टोरी अलग है, जैसे काढ़े को जिस प्रकार से लोगों ने इसका बहुत ही ज्यादा ये कर लिया और बाद में जैसे कि बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हमने अनुभव किए थे.
अभी वो दौर तो चला गया है, अभी हम बहुत ही अच्छे बेटर कंडीशन में हैं। सो ये एक पूरा 2 साल शायद हमको बहुत ही कुछ सीखने को मिला। आयुर्वेद के सभी कल्पों का प्रयोग, दूध का, पानी का, चाय का, काढ़े का, सब कुछ बहुत ही एक बार फिर से तरोताजा हो गया था। इस समय में बहुत ही एक अलग ये शायद समय था बिल्कुल। अभी तो हम बहुत ही बेटर कंडीशन में हैं। तो सो थैंक यू वेरी मच ऑल, डॉक्टर गुणवंत येवला सर फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, डॉक्टर अनुज जैन सर वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, और काफी सारा हमारे वैद्यों को भी इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। डॉक्टर संजय कुमार सर निश्चित रूप से उन्होंने आज अपनी गुरु की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और हम सभी को अच्छा सुना दिया। शायद हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा, और ऐसे गुरु चाहिए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में कि हमें कुछ सिखाए और सही बात क्या है ये भी समझाने की जरूरत है। डॉक्टर कुलकर्णी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और सभी वैद्यों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि उनके बिना तो ये महफिल सजती नहीं, उनके क्वेश्चंस के बिना तो ये हमारा डिस्कशन अधूरा हो जाता। सो थैंक यू वेरी मच ऑल, एंड थैंक यू आयुष दर्पण। सो थैंक यू डॉक्टर जोशी सर एंड डॉक्टर पाठक सर। नमस्कार सर, फिर एक बार जरूर मिलेंगे और कुछ अलग विषय के साथ। सभी का आभार। तो आज का ये रसायन का हमारा जो सेशन था इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार सभी को, आभार। नमस्कार।